R1171. Lekin we have already complied with the order, so therefore that becomes infructuous. नहीं मगर कोई इतला तो देना हाई कोर्ट को जा करके। सर दी है, इसमें मेंशन की होगी। आप पेज देखिए, पेज 657, पेज 650 है। में आपका ये 81171 ऑफ 2023 ये पिटीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपसे पूछा उन्होंने, when confronted with the query that since inter-party elections of Pakistan Tehreek Insaf pursuant to impugn order dated 13 September 2023 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, उस पर आपके वकील साहब ने जवाब दिया कि ये अभी हम इसको आगे already subjected to full bench of this court। तो ये नॉलेज में आ गया हाई कोर्ट। नहीं ये पूरा आगे लिखे ना submits Submit that since similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 of 2023 and other allied matters, proprietary demands that instant petition be also be referred to the learned full bench. ये हुआ है बस इसके में। मुझे देखें अब मैं जरा बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ। एक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर आपके किया, कब ऑर्डर है इनका इलेक्शन कमीशन का? ऑर्डर माय लॉर्ड 428 पे जो पेज है उसका तारीख है 23/11/2023 23/11/2023 ये नहीं वो जो रिट पिटीशन में चैलेंज किया मैं तो याद हो गया। सेकंड वाला पहला वाला तो यही है ना, डिक्लेयर होल्ड दैट इंप्यून ऑर्डर। The matter was heard on 13th September। एक सेकंड, आपका ऑर्डर किधर इलेक्शन कमीशन का वो देखा जो आप पहले पढ़ रहे थे? Page 428। This is the order passed on 23rd November 2023। 23rd नवंबर। ये डेट कहाँ लिखी है? सर डेट से पढ़ के बता रहा हूँ आपको, परेड क्लॉज में जो इनकी है ना हाई कोर्ट में। डेट ऑफ हियरिंग वाज 13/9। डेट ऑफ हियरिंग टुडे, अनाउंस टुडे। तो इसकी तारीख क्या है इस ऑर्डर की? इस ऑर्डर की तारीख सर 23/11 है, ये 428 पे लगा हुआ है। 23/11/2023 है जी सर। और नीचे उन्होंने साइन पे डेट नहीं डाली है बट वो डेट ऑफ हियरिंग ऊपर लिखा हुआ है। जी सर। तो उन्होंने एक साथ ऑर्डर को चैलेंज भी किया और एक साथ उन्होंने इलेक्शन भी कर लिया। यस मैडम। ये हुआ? यस सर। तो फिर उन्होंने ये दरख्वास्त क्यों की हाई कोर्ट को कि मेरा ये इसको पेंडिंग रखें? वो कह रहे थे कि जिसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। They could have, but नहीं मतलब मुझे इसकी जरा लॉजिक बताइए खान साहब। वो फिर अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो फिर उसको आप वापस ले लें, बात को खत्म करें, उसको जिंदा क्यों रख रहे हैं पिटीशन को, लाहौर वाली को? to the contrary, they had it referred to a larger bench of 5 judges. Am I missing something? I can't follow this. Sir, we don't know what was the logic. The elections had taken place, but they nevertheless elections. अगर वो Zafar will explain why that was. जी फरमाइए। The see-through petition has actually been filed when Election Commission was trying to remove the chairman Imran Khan from the position of chairmanship of the PTI. And they were making their excuse. आप देखें ना, अब आपने आगाज ही बात का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से किया है। No, Your Honor. आप हमें सिर्फ ये बता दें कि वो जो पिटीशन आपने जो फाइल की थी जब वो क्यों पेंड हो गई? उसको आपका क्या बना, आपने उसको जिंदा क्यों रखा है? Your Honor, वो उसके साथ क्लब है, वो सेम पिटीशन है, डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है क्योंकि इसमें चेयरमैन ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए वो उसके साथ हमने क्लब करवाया कि लीगल इश्यूज पे। यस 332 है। यस योर ऑनर। खान साहब मुझे बात समझ नहीं है, आप मुझे समझा दें खान साहब। आई हैव नॉट अंडरस्टूड, जरा मुझे नहीं जरा समझा देना, बात समझ नहीं आ रही है। बात की जाती, हमने वो पिटीशन उसके साथ इसलिए क्लब करवाया कि जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन ने दी थी। पहले बताया 332 है क्या? 332 वो पिटीशन है जिसमें हमने चेयरमैन पीटीआई के रिमूवल फ्रॉम चेयरमैनशिप के केस के सिलसिले में जो नोटिस आया था उनको इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू किया था इमरान खान को। यस, तो उसका तो इससे इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है ना। यूनाना डिस्क्वालिफिकेशन का केस चला रहे थे कि हम क्यों ना आपको रिमूव करें फ्रॉम चेयरमैनशिप। वो तो हम बात समझ गए, वो केस ऑर्डर है ना। यस योर ऑनर, इससे तो कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन की बात पूछ रहे हैं आप। योर ऑनर ताल्लुक है,
وہ ڈسکوالیفیکیشن کا بیس بنا کے چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہ رہے تھے. اس میں جب نوٹس آیا کہ آپ کے الیکشن نہیں ہوئے تو اس میں انہوں نے وہ فیکٹس کا ذکر کیا, لیگلی انکریکٹ کرایا. تو جب کورٹ میں چلا گیا, کورٹ میں پڑھا گیا تو انہوں نے کہا سیم ایشوز انوالو ہے, لہٰذا لیگل سائڈ پہ اس کے ساتھ کلب کر دیتے ہیں. ادروائز وہ انفریکچوس ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے ٹو دا ایکسٹینٹ آف انٹرا پارٹیز الیکشن. تو اچھا ایک سیکنڈ ہے, ایک سوال اور اٹھے گا. جی یور آنر. ایک میٹر آپ نے خود لاہور ہائی کورٹ گئے, 5 ممبر بینچ بنوائی, الیکشن کا میٹر ہے, الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس کیا ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن کرائیں, آپ کا موقف تھا الیکشن صحیح ہو, پھر آپ نے کہا چلو پھر بھی کر دیتے ہیں الیکشن دوبارہ, خوش ہو جائیں, تو پھر آپ لاہور ہائی کورٹ ہی میں رہتے نا, پھر آپ پشاور کیوں چلے گئے؟ یور آنر ہم نے الیکشن پشاور میں کروائے تھے, الیکشن پشاور میں کروائے تھے, تو اس سے تو کوئی یور آنر میجارٹی آف ریزن. خان صاحب ذرا مجھے یور آنر قانونی ہم کیوں گئے تھے یور آنر؟ فورم شاپنگ کرنے نہیں گئے تھے. اسلام آباد میں ہماری لیڈرشپ آپ نے استعمال کیا, میں نے نہیں استعمال کیا. میں یہ یور آنر صرف ایک منٹ, اب آپ دیکھیے نا, ایک کورٹ کے پاس ایک لسٹ پینڈنگ ہے, یس یور آنر, الیکشن ہی کے مطابق ہے, اور نہ صرف عام بینچ ہے, انہوں نے 5 ممبر بینچ آپ کے لیے بنا لی ہے. جی اب وہ میٹر پینڈنگ ہوتے ہوئے دوسرا ہائی کورٹ دیکھ کیسے سکتا ہے اس بات کو؟ یہ اس کا ذرا قانونی جواب دے. یور آنر میں نے عرض یہ کیا کہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف انٹرا پارٹی الیکشنز وہ پٹیشن انفریکچوس ہو گئی جب ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. وہی آرڈر ہے نا, آرڈر تو وہی الیکشن کمیشن کا. یور آنر وہی آرڈر ہے, لیکن اس کو جب ہم نے عمل کر لیا اس پہ, جب ہم نے امپلیمنٹ کیا تو ہم نے الیکشن کرائے پشاور میں. پشاور میں اس الیکشن نا انفریکشس ہونے کی, یہ میرے حساب سے آپ کی بات لاجیکل ہے, مگر اس آرڈر میں آپ کے وکیل نے کہا کہ نہیں انفریکشس ہوئی ہے. یور آنر وہ لیگل سائڈ پہ انفریکشس نہیں ہوئی نا. سید علی ظفر ایڈوکیٹ representing the petitioner submit that since similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. Yes, Your Honor, High Court raised the question. High Court has raised the question that it has become sub judice because you have already complied with the order. Yes. But if your counsel said that it is not sub judice, let it be fixed before the same 5-member bench. Your Honor, yes, to the extent of holding up intra-parties elections. That is correct. Yes. According to legal situation, it has Yes. become infructuous. So that has become infructuous to the extent of intra-parties elections, but since the questions were the involved. divergent arguments between you and the earlier counsel. Your Honor, the legal questions involved in the petition were alive, so they were kept to the extent of those legal questions, and that's the reason that has been clubbed and referred to the full court. We held the election, they were full, the election were held at Peshawar. Your Honor, the entire leadership was unable even to come to Islamabad. آپ کے اپنے الیکشن کمشنر نے کہا they were not held in Peshawar, they were held in some place called چمکنی. Your Honor, ہم نے ارینجمنٹ کروائے تھے, ان کو سیکیورٹی مانگی, ہم نے پشاور. جی یور آنر. Are you arguing as party, as counsel, what? یور آنر, جو آپ کی اسسٹنس ہو سکتی میں اس کا جواب. ہم تو سینئر کاؤنسل سے لینا چاہ رہے ہیں. We have noted all the questions. میں صرف دیکھیے خان صاحب, دیکھیے let's go by constitution and the law. جی ہم ابھی اس پہ نہیں آئے کہ آپ نے صحیح کیا غلط کیا, انہوں نے صحیح کیا غلط کیا. جی آپ الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر پاس کر دیا, صحیح کیا غلط کیا وہ بھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ آرڈر کو آپ نے جا کے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, جہاں سے ایک پہلے سے پٹیشن پینڈنگ پڑی تھی, آپ نے کہا اس پٹیشن کو اس کو ساتھ لگا لیں, چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کی ریکویسٹ پہ لارجر بینچ بنا دیں, انہوں نے 5 ممبر بینچ بنا دی. پھر علی ظفر صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی کورٹ نے آبزرو کیا کہ اب تو آپ نے الیکشن کر لیے, تو اب آپ یہ پٹیشن اس کو ختم کر دیں. انہوں نے کہا نہیں, اس کو آپ رکھیے سب جوڈیس وتھ فل بینچ. اب یہ میٹر الیکشن کا میٹر ہے. چلیں اب یا تو آپ انتظار کرتے کہ ہائی کورٹ, یا تو آپ اس کو واپس لے لیتے, وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. انفریکچوس خود سے نہیں ہوتی نا, کوئی آئے گا کہے گا پھر آرڈر اس پہ پاس کرے گا, جج انفریکچوس ہو گئی ہے واپس ہو رہی ہے, جو بھی آپ کہنا چاہیں. اس پٹیشن کو آپ زندہ رکھ رہے ہیں, آپ جا کے اشارہ ہائی کورٹ کیسے پہنچ گئے یہ مجھے سمجھ نہیں. دیکھیے یہ تو سبسیکوینٹلی جب الیکشن ہو گئے اور اس کو الیکشن کمیشن نے نل وائڈ ڈکلیئر کیا, پھر ہم پشاور ہائی کورٹ گئے. تو لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں پسند آیا؟ نہیں لاہور اس کی وجہ آپ کو وہی, آپ ایک کورٹ جاتے ہیں پھر دوسرے جاتے ہیں. نہیں سر, اب وہ مطلب یہ نہیں سر, اس کا وجہ ہے, اس کی وجہ یہ جب ہم نے الیکشن کرائے
ہمیں کہیں اور سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا رہی تھی, صرف پشاور میں ہمیں سیکیورٹی فراہم کی گئی. آپ مانگ لیتے نا کورٹ سے بات کہ مجھے سیکیورٹی نہیں جا رہی ہے, ہم اگر ہائی کورٹ نہیں دیتی ہم آپ کو دیتے. ہاں یہ بتائیں, یہ نہ بتائیں خان صاحب, مشکل سوال آپ ان پہ چھوڑ دیتے. سیکیورٹی کا یہ مشکل سوال ہم ہمیشہ سینئر کاؤنسل سے پوچھتے ہیں. یہ مجھے رائٹنگ میں جو آپ سارے آپ دیجیے, بالکل دیجیے, جو آپ دیں گے رائٹنگ میں آپ کے سامنے. مگر دیکھیے نا پھر مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ایک عام کیس ہوتا ہے نا, یہ ہے ٹائم ریلیٹڈ کیس. یہ آپ کو سمبل نہیں دے رہے ہیں, آپ کو ایک سمبل چاہیے, تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا سمبل بنتا ہے آپ کو فوراً مل جائے. تو ہم عام طور پہ تو آپ کو بہت ٹائم دے دیتے, مگر اس میں پھر آپ کو سمبل نہیں ملے گا, ہم یہ نہیں چاہ رہے. اسی لیے ہم نے کہا آپ جب چاہیں ہم سننے کے لیے تیار ہیں. دوسرا ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی میں نے اپنے کولیگس کو کہا کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ کیس ہے, اس کو پہلے کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں جب تک یہ اس پہ, اب دیکھیں وہی سارے لوگ ہیں, سید علی ظفر صاحب بھی وہاں موجود ہیں, وہ بھی نہیں بتا رہے ہمیں کہ کیا بنا اس کیس کا. یہ تو نہیں کہ دوسرے کاؤنسل ہیں, وہی کاؤنسل ہیں نا سارے پینڈنگ ہے. We'll submit in the morning, sir. چلیں, مگر یہ دیکھیں اب آپ گور صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا جو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا, فورم شاپنگ, جو کورٹس جنرلی فراؤن اپون, کہ یہاں سے ریلیف نہیں ملی تو جا کے وہاں فائل کر دو, وہاں سے نہیں ملی تو دوسرے کورٹ میں چلے جاؤ. تو پھر یہ پھر سسٹم کو خراب کرتا ہے. تو دیکھیں اب آپ نے ٹھیک ہے لاہور چلے گئے, فائن, تو پھر وہیں رہیے نا لاہور میں, پھر آپ کیوں جا رہے ہیں پشاور؟ یا پھر آپ جائیے جہاں کے الیکشن کمیشن موجود ہے جو کہ اسلام آباد ہے. تو دیکھیں اب آپ کہیں جی میں الیکشن کرتا ہوں جا کر فلاں جگہ میں اس لیے پٹیشن کروں گا, آپ اپنا کاز آف ایکشن نہیں کریٹ کر سکتے. کاز آف ایکشن از کریٹڈ بائی لا, یعنی کہ میں یہ کام کروں گا تو میں نے جو کام کیا اس بڑی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے جناب, اچھی طرح جانتے ہیں بھائی. آپ کے سامنے بات پوری چلو, آپ کے سامنے پینڈنگ ہے کیس جس میں ہم نے عرض کیا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے, ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے, ہمیں کہیں سیکیورٹی نہیں دی جا رہی, ہمارے لوگوں کو اندر کیا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں کہیں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ان دیز سرکمسٹانسز میں, نہ اسلام آباد میں ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی نہ لاہور میں جہاں ہم الیکشن کرا سکتے. سو پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ دی اونلی پلیس ویئر سیکیورٹی از پرووائڈڈ از ان پشاور, اینڈ therefore we held the election in Peshawar. When elections were held in Peshawar, territorially it was only right and proper to file it before the Peshawar High Court. So see, these are the various stages of a case. دیکھیے خان صاحب جی, ایک ہوتا ہے انتظامیہ, اس میں ابھی اب کئی, ایک ہے الیکشن کمیشن وہ ایک آئینی ادارہ, ایک ہے عدالتیں جو کہ آئینی عدالتیں ہیں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. آپ آئے ہمارے پاس, علی ظفر صاحب اس کیس میں تھے اور الیکشن کی بات ہوئی, ہم نے اس کیس کا فیصلہ 12 دن میں کر دیا کہ الیکشن ہوں. 8 فروری کی تاریخ طے ہوئی, سب لوگ خوش تھے, آپ بھی کی پارٹی خوش, الیکشن کمیشن خوش, صدر خوش, کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں کہا, اٹارنی جنرل خوش, چاروں ایڈوکیٹ جنرل خوش, سب نے یہ متفقہ طور پہ یہ ہو گیا. تو جب بھی کوئی, اب آپ یقیناً آپ کے خلاف بہت ساری چیزیں ہوں گی, مگر کورٹ اس وقت آئے گا جب کوئی آئے تو اس کے سامنے نا. دوسرے کیس میں کنٹمپٹ میٹر میں آئے, وہ ایک اور بینچ نے فوراً آرڈر پاس کر دیا کہ جی ساری سہولتیں جیسے اکارڈنگ ٹو لا دی جائے. اس کے بعد کنٹمپٹ آئی, فوراً ہم نے لے لی کنٹمپٹ اپلیکیشن, جو انہوں نے کیس بنایا ہم نے ان کو رپورٹ منگوا لی. تو یہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے, یا تو بتائیں ہم نے کوئی کام نہیں کیا. لاہور ہائی کورٹ کو آپ گئے, آپ نے کہا جی لارجر بینچ بنا دو, انہوں نے 5 ممبر کی بینچ بنا دی. پھر آپ اس کو ابینڈن کر رہے ہیں نا, یا تو آپ کہیں کہ میں واپس دیتا ہوں کیس ختم, مگر اس کیس کو لٹکا کے کہیں اور کیسے جانا ہے, یہ ذرا سمجھانے کی, ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں وہ ورچولی انفریکچوس ہو گیا, اس لیے تو پھر ایک لائن کی درخواست دینا تھی نا. وہ تو کورٹ خود آپ کو کہہ رہی ہے آپ نے الیکشن کر لیے تو یہ تو میٹر ختم ہو گیا. آپ نے کہا نہیں یہ فل بینڈ کو آپ بنائیں اور یہ ہم کریں گے. تو یہ تو پھر آپ نے سوری ٹو یوز, مگر یہ تو پھر آپ نے اپنی پیر پہ کلہاڑی مار دی. پھر آپ نے اپنے آپ کو روک دیا لاہور ہائی کورٹ کے جوریسڈکشن میں. آپ ادھر سے نکل جاتے, آپ کہتے ہیں یہ ختم ہو گیا,
जी थैंक यू वेरी मच। उसके बाद छुट्टियां हो गई थी, केस लगा नहीं उसके बाद। जो भी बात है, मगर वो लाहौर हाई कोर्ट ने सीज तो कर लिया ना, लिस्ट वहां पड़ी हुई है। एक इलेक्शन का मैटर लाहौर हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, एक इलेक्शन का मैटर इस्लामाबाद में पेशावर में चला गया, तो अब कॉन्ट्रडिक्शंस भी आ सकते हैं। ये तो कभी नहीं करते हैं ना कि साहब ये शॉर्ट ऑर्डर है, ये जुरिस्डिक्शन का इशू उठाए हाई कोर्ट के सामने, पेशावर हाई कोर्ट में, वेदर the writ is maintainable according to the territorial jurisdiction of the court or not. Yes, it is. Because we have no order, we have only short order. We do not know what are the reasons, if any, assigned by the learned bench of the... Yes, sir. Because in this case, is there a question of territorial jurisdiction? I'm sorry to interrupt you. Why? I was counsel for the ECP. You raised the objection? In which case? In my lord, writ petitions from which this judgment, the impugned judgment arises, my lord. Yes. And to answer my lord's question, not only did I raise the objection of forum shopping based on the Tirimzi judgment, but several of the complainants who were also heard, they also raised the same objection that in the first instance, my lord, the order dated 23rd 11 is impugned in Lahore High Court. Then the order dated 22nd, which arises from that, is impugned in Peshawar High Court, and through an identical petition also impugned in the Lahore High Court. So there is an identical petition to petition 617. That's not party's petition. This is it is absolutely incorrect. My lord, that petition making incorrect statement. May I complete what I'm saying? चलिए आप नोट कर लीजिए, that can be responded that because petition is issue of jurisdiction. नहीं तो ये जरा ये तो तय्युन कर लें, WP 81171 of 2023 and WP 332 of 2023, are they still pending in the Lahore High Court? Yes. Can we have a clear statement on that? Yes. आप बताएं खान साहब, आप you are the petitioner. According to the last order, both are pending, I think. Pakistan Tehreek-e-Insaf is the petitioner in both these petitions apparently. ये पेंडिंग है, आज की तारीख में क्या पोजीशन है? 332 में योराना PTI नहीं है, उसमें इमरान अहमद खान नियाजी है. Is it pending or not? Yes, pending. दोनों pending है. दोनों pending हैं. That is his personal grievance on that. चले वो भी अलग कर दिया, मगर आपने उसको क्लब कर दिया 811171. So how, when the matter is pending adjudication before a court of law, how can you go out of the territory of that court? Your Honor, no subsequent cause of action arise हुआ, subsequent election take place हो गए, जिस तरह बंदा convict हो जाता है, सजा काट के बाहर आ जाता है, अपने conviction से कोटल चाहता है, तो ये वही है. हमने कहा जो फाइंडिंग दी है पहले में वो भी गलत थी. पहले डिसीजन इस बात पे सेट असाइड कैपेसिटी में हमें, आप वकील आज हैं या मैं आपकी सिर्फ जरा देखिए ना, ये जरा देखिए, ये खान साहब ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस है ना, तो हम जरा खान साहब की अगर सीनियर काउंसिल का फिर फायदा हम नहीं उठा रहे ना, अगर आप या फिर वो भी नहीं बात कर सकते हैं, वो समझते हैं कि वो खामोश हैं, तो हमें कोई इतराज नहीं, आप चुन लें, मगर हमें आप उनके कान में भी बता सकते हैं खान साहब के, मगर जरा देखें लीगल इशू को हम जरा रिजॉल्व तो कर लें ना. तो ये देखें, मेरा जो तरीक़ेकार है शायद लोगों को पसंद भी नहीं है, अगर मेरे या पसंद है पता नहीं, जो मेरे जहन में कोई कानूनी लीगल इशू खड़ा होता है मैं खामोश नहीं रहता हूँ, मैं बता देता हूँ कि ये आप अटेंड कर लें. ठीक है, जब मैं वकालत करता था मुझे वो जज पसंद होते थे जो मुझे बता देते थे कि भाई ये इशू है. कुछ लोग खामोश रहते थे, बाद में कुछ फैसला करते थे, पूछा भी नहीं मुझसे. तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ में है कि जो जनाब ने सवाल पूछा, हम उसमें आपको ये तो फैक्चुअल प्ली है ना, इसमें तो कोई लीगल प्ली क्या होगा कि आपने विड्रॉ क्यों नहीं की, और या आपने उसको केस को चलाया क्यों नहीं, या आप दरखास्त देते कि आप केस मेरा क्यों नहीं चला रहे हैं कि भाई बहुत अहम केस है जल्दी करें. We will address this. Okay. So can we continue with जी मखदूम साहब फरमाइए. Yes, my lord, just to complete the sequence of what your lordship was presently dealing with, even after this second order was passed, in spite of the pendency of the petition in the Lahore High Court in the first order, this second order was challenged before the Peshawar High Court. It was more or less within a few days also challenged before the Lahore High Court. The Lahore High Court dismissed the petition. और पिटीशन है जी दूसरे ऑर्डर के खिलाफ. That is, my lord, the petition number 287 of 2024. 287 of 2024. नहीं, पहले पिटीशन दिखाई कहाँ है सर? This is page 615 to page 615 to 630.
ये एक चीज अजय, ये 2 केसेस मालूम कीजिए लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं। ये करने की बेटी है Peshawar at 616, your lordship will see they claim to be ex-secretary general and candidate PTI Gujranwala. ये उमर आफ्ताब हैं, उमर आफ्ताब और बिलाल नासिर, page 616 and Bilal Nasir. तो ये तो PTI नहीं है। No, they are, he's, if your lordship will see, son of Chaudhry Dillu, president PTI Sheikhupura. वो उन्हीं के ही हैं, वो उसमें लिखा हुआ है। Is the president PTI Sheikhupura. This petition का नंबर क्या है? This petition number, my lord, is नील लिखा है 287 of 2024. इसमें क्या उनकी प्रेयर है? Identical to 6 months. Identical, I will read out to your lordship. That's at page 629. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this court may kindly be pleased to 1. Instant petition may kindly be accepted, hold and declare that the impugned order of ECP dated 22/12/2023 is without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and as a consequence thereof set it aside forthwith. In the meanwhile, suspend the impugned order dated 22/12/2023 forthwith and direct the Election Commission, Pakistan, to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required with section 2093 in the interest of justice, and to restore its election symbol forthwith. Declare that election symbol has been illegally and unlawfully been withdrawn, which is inter alia violation of fundamental rights of the petitioners. अब जो पेशावर वाली petition है वो दिखाइए। सर उसका पेज नंबर 49 है, Part 1 में है सर। And if your lordship see, your lordship will find that they are virtually the same. इसमें ऑर्डर का जिक्र नहीं है 22/12 का। ये 22/12 का ऑर्डर कौन सा है? The impugned order is of 22/12, my lord. इसमें तो नहीं है कहीं 22/12। प्रेयर के अंदर नहीं लिखा हुआ, but otherwise the petition impugns the order. कहाँ लिखा हुआ है? My lord, your lordship will see the impugned order in the index at page 30. And नहीं, पेशावर में जो petition है, अभी प्रेयर क्लॉज में 22/12 का जिक्र कहाँ है? Declare the impugned order. Prayer mentions the impugned order. If your lordship will see the impugned order, that's at page 21. नहीं, मैं इनको कह रहा हूँ कि पिटिशनर ने डिस्क्राइब क्या किया है impugned order। ये impugned order सर पेज 33 पे grievance and impugned order। If your lordship will see, ये लिखा हुआ है the aggrieved by order dated 22/12/2023 passed by respondent number 1 as the impugned order. पैराग्राफ 1 में जिक्र है। It's the same. अच्छा, इनका कहना कि क्या है, ये हमने फाइल नहीं की है लाहौर वाली? Sir, right now that's what your lordships have heard. I don't know. I would ask that question. In Lahore, has the Lahore High Court passed an order? In Lahore High Court, an order was passed, and I have placed that order before your lordship. That is at page 631. अच्छा, ये क्या है? This is an order of the learned single judge. ये क्या किया सिंगल जज ने? Single judge, sir, held that you have also gone in respect of the same order to Peshawar, so I will not hear the matter. But the determination by the single judge is at page 634. ये डिस्क्लोज किया था कि WP 81171 और WP 332 पेंडिंग है। सर 8771 तो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग थी ना सर? ये भी तो लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट जी, ये लाहौर हाई कोर्ट में है। इसमें इन्होंने जिक्र, ये इनको पता था जी, पेशावर इसका जिक्र है डिटर्मिनेशन में। The learned single judge says that. If your lordship may see, नहीं तो उन्होंने कहा हम नहीं फैसला करेंगे। जी, they said that we will not deal with it. If your lordship see page 637. ये तो ऑर्डर स्पीकिंग, ये तो फिर तो ठीक है, ये ऑर्डर will not come in their way.
This is the second order, but there is an observation by the learned single judge in respect of point number 2 on page 639. उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी पेंडिंग है पेशावर में. That, and my lord, they say 639 point number 2. The learned single judge makes the observation, learned law officers also objected to maintainability of the petition by submitting that fundamental right of freedom of association is subject to reasonable restrictions imposed by law, which in the instant case is the Act and the rules framed thereunder, most specifically sections 208 and 215 of the Act, and therefore without challenging the vires thereof and declaration of the same being ultra vires Article 17, the relief cannot be granted. The learned counsels for the petitioners, when confronted whether the petitioners have challenged the vires of section 215(5) of the Act, read with Article 17 of the Constitution, replied that the same has been challenged before the Peshawar High Court. If your lordship may see 5th line from the foot of the page, in view of the aforesaid, the relief claimed by the petitioners cannot be granted without declaring the said provision of the Act ultra vires Article 17 of the Constitution. I can't find Sir, last five lines. On page 639? 639. Achha, okay. In view of the aforesaid, the relief claimed by the petitioners cannot be granted without declaring the said provision of the Act, ultra vires Article 17 of the Constitution. ये उन्हें challenge किया ये order? ये order में ये DB में गए sir. उसका number क्या है ICA का? They went in division. एक दिन इस order की date क्या है? Yes, sir, we got that order yesterday. ये इस order की तारीख क्या है? Sir, this order is 11th January. 11th January. In intra-court appeal number 2282. नहीं, अब इंट्रा कोर्ट अपील का नंबर बताइए. जी, इंट्रा कोर्ट अपील का नंबर है. लर्नेड सिंगल जज का क्या ऑर्डर है? 2282. लर्नेड सिंगल जज के ऑर्डर की तारीख बताइए. The order of the learned single judge is dated 3rd of January 2024. 3rd of January 2024. At page 631, your lordship will see the date. अब ये गए इंट्रा कोर्ट अपील में. जी, ये they go in intra court appeal. ICA में नंबर ICA का 2282 of 2024. जी. That इसमें क्या होल्ड किया? Sir, in that आपने कॉपी दी खान साहब को? ये विड्रॉ कर ली इन अपील. जी sir, they withdrew it, and paragraph 3 is the relevant paragraph on page 2. In this view of the matter, the learned counsel for the appellant, when confronted with the prayer qua the illegality or irregularity in the judgment passed by the learned single judge in chambers with respect to section 2155 of the Act, a bid regarding allocation of election symbols, he has nothing in his pocket to rebut the same and opts to withdraw this intra-court appeal, which is hereby dismissed as withdrawn. Consequently, the observations rendered by the learned single judge in chambers are hereby upheld. Do they own these proceedings or they don't own these proceedings? My lord, or you don't know? This is for the respondents before your lordship to say, but the two petitions in Peshawar and Lahore were verbatim. ये पूछ लेते हैं खान साहब जी सर, पूछ लेंगे. खान साहब, do you own this petition or you don't? 287 and ICA 2282. No, we don't. नहीं, who are these people? क्या नाम का? बिलाल नासिर चीमा and ये कौन लोग हैं? बिलाल नासिर चीमा कौन These are है? not on behalf of the party. Candidates have filed. नहीं, who's Bilal Nasir Chima? Associated with you, there are two. One is Bilal Nasir Chima and the other is Chaudhry Umar Aftab Dhillu. I hope I've pronounced it correctly. Do you own these petitions or you don't own these petitions? No, we don't. And who are these two gentlemen? Do you know them? No, we have not. Who are these two gentlemen? PTI के सर. There may be members of the party. I don't know. I think They are नहीं, not इसमें लिखा है officers of the ex. party. नहीं, इसमें लिखा हुआ है ना, President PTI शेखुपुरा, ex Secretary General and candidate PTI. देखिए, दो बातें होती है ना. एक तो कैंडिडेट अपने तौर पे जरूर कर सकता है. मुझे वो क्या उसको कहते हैं, मेरा नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, वो तो बात उसकी सही है. मगर इसमें जो उन्होंने प्रेयर मांग ली है वो तो पार्टी की बुनियाद पे मांगी है. तो
आपने कोई स्टेटमेंट उधर दिया कि ये इसको काटें, ये प्रेयर इसको इधर से, ये प्रेयर हम ये देखिए पीटीआई का जिक्र कर रहे हैं. He had no authority on behalf of the party to file or मैटर है ना. अब हमें क्या पता आपके पास अथॉरिटी है, गौर साहब के पास अथॉरिटी है, ये तो हम नहीं कर सकते ना तय्युन. मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हमारी तरफ से यानी पार्टी की ऑथराइजेशन से नहीं हुई, ये इंडिविजुअल्स ने की है. मगर खान साहब जैसे आपसे लिखा हुआ है, ये उमर आफ्ताब, सॉरी सर, उमर आफ्ताब है प्रेसिडेंट पीटीआई शेखुपुरा, प्रेसिडेंट पीटीआई शेखुपुरा. और ये जो बिलाल नासिर चीमा साहब हैं, एक्स सेक्रेटरी जनरल एंड कैंडिडेट पीटीआई गुजरात. नहीं, मैं आप हमारी बात सिर्फ समझ लें, नोट कर लें. जी जी बताएं. एक चीज है ना, पता नहीं हो सकता है हजारों पिटीशन फाइल हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, मगर जब ये चीज अगर उस पे आ जाए रेडार पे तो इसका जवाब उसका आप जवाब हमें दे दीजिएगा. अगर जहां तक उनकी जाती मसले हैं, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा है, कोई और इशू है, बिल्कुल करें. वो तो हर कैंडिडेट अपनी भरेगा, आप पार्टी से तो ताल्लुक नहीं है उस लिहाज से. मगर अगर वो पार्टी को जो प्रेयर उसने मांग ली ना, वो पार्टी की मांग ली प्रेयर उसने, और उस पर जज साहब ने फाइंडिंग भी दे दी, तो अब वो जजमेंट को हम इवेपरेट तो नहीं करेगा ना हवा में. उन्होंने कहा कि जी जब तक आप ये दो शिकें इलेक्शन एक्ट की चैलेंज नहीं कर सकते, आप ये बात कर नहीं सकते. हो सकता है गलत है, हो सकता है सही है, मगर एक जज की फाइंडिंग आ गई, वो फाइंडिंग दो जजेस ने कंफर्म कर दी. तो अब तसादुम तो हो गया ना, पेशावर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में. अब जजमेंट्स गायब तो नहीं होंगे. वो लाहौर हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट वाला जजमेंट आपने हमारे सामने चैलेंज किया है ना सर? हम पार्टी नहीं थे, हमने चैलेंज नहीं कर सकता. इशू कर रहे हैं कोई अपनी तरफ से चैलेंज करना चाहिए दोनों को पार्टी बता रहे हैं. सर उसमें हम पार्टी नहीं है, पार्टी द पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट देयर. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना, मगर जज साहब ने सही या गलत एक फैसला तो कर दिया है ना, वो आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है. तो HM साया केस में अगर आप पार्टी ना भी हो तो आपको हक तो मिलता है ना. तो अब आपको पता चल गया है एक जजमेंट आपके खिलाफ आ गया है, और किसने फाइल किया है? कोई आपके दुश्मनों ने नहीं किया, आपके अपने लोगों ने फाइल किया है. वो तो एक अलग बात हो, किसी ने शरारत खेली आपके साथ और चलो भाई ये कर दें. वो आप ही के लोग हैं, आप उनको आपने नजरअंदाज भी नहीं किया कि हमने इनको पार्टी से खारिज कर दिया. क्या है, आपके कैंडिडेट भी हैं पीटीआई के, तो उनको हम ऐसे तो हम, और अब हाई कोर्ट के जजमेंट्स को हम क्या करेंगे? वो कोई चैलेंज करेगा ना, नहीं तो अब जो भी फैसला है उसको जब तक कोई चैलेंज तो करे ना, फिर हम आगे पीछे उसको कर सकते हैं. अगर आप उसको चैलेंज ही ना करें, उसको छोड़ दें कि जी हम तो उसमें पार्टी नहीं थे, जजमेंट फिर भी रहेगा अपनी जगह पे ना, वो तो फॉर ऑल टाइम्स जो कम रह जाएगा अपनी जगह पे. अब वो आपको भी शायद अफेक्ट करे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी अफेक्ट करे. कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टीज आ सकती है कि भाई ये जजमेंट गलत है, तो वो तो कह सकते हैं कि हम तो इस पार्टी में नहीं थे, हमें सुना नहीं. मगर आपका तो फिर नहीं कह, आपके कहना जरा मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से. बहरहाल आप नोट कर लीजिए बात. चलें आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, ये पेशावर हाई कोर्ट का भी आईसीए में ऑर्डर हुआ है, डब्ल्यूपी में हुआ है? WP, my lord. आईसी है ही नहीं है, पेशावर में आईसी नहीं होता. Two judges here, the petition like in Sindh, my lord. As a general rule, now this I'm asking a question. Court's order of a high court by a learned single judge in writ petition, and another province's court order in a ICA, which takes priority? My lord. Have you understood the question? Yes, my lord. Yes, my lord. Over there, at least at the ICA, a determination has... Forget this case. I'm asking a question of law. My lord, it's a DB order in both cases. Yes. So they stand more or less on the same plane. Yes. Generally. You won't add the one judge to the two judges and say there are three judges now. No, my lord, because the order is that of a division bench in both cases. Interesting question. Yes. Okay. Have you ever considered something like this before? Not this honorable court, no, my lord. This has arisen, the issue has arisen sometimes. ये इसको छोड़ें, general question of law पे पूछ रहे हैं. General question. One DB decides a matter and one ICA. ICA is an appellate forum. Decides a matter. Both stand on equal footing if there are two judges naturally in both. So that was the question. Yes, my lord. Because I've never considered this question before. My lord, I haven't come across a judgment where the issue has been considered.
continue. My Lord, I was taking your Lordship through page 140, which your Lordship had taken a look at, and the election of office bearers, your Lordship had taken a look at 141, 142. Then we, my Lord, proceeded to page 192, where your Lordship was dealing with the Federal Election Commission. And Election Commission shall be comprised following: Federal Election Commission. वो हमने पढ़ लिए 4 सूबों के और 2 दूसरी टेरिटरीज के, and sections की violations हो रही है. And these are the ones which the Election Commission says. What is the position of the Election Commission? They say that there was a duly elected commission. That was, at that time, the Federal Election Commissioner was Mr. Jamal Akbar Ansari. Now, thereafter, we have been told that this is the current gentleman, is the chairman, who is also the respondent number 2, is the Chief Election Commissioner of the party. Insofar as we are concerned, we have not been informed of how he has come about. I showed to your Lordship that he has been appointed as a result of an order passed, which is on your Lordship's files, which your Lordship just saw, by Mr. Umar Ayyub. The Election Commission says this is not the correct procedure for appointing someone, because that is dealt with. Has Jamal Ansari left the party? My Lord, the Election Commission says in the order which was impugned before the Peshawar High Court and which is before your Lordship, that the Election Commission was not informed how this change has taken place. As a matter of fact, do you know or no? As a matter of fact, we don't, my Lord. My instructions are that we don't know. I'm thinking of another thing. PTI's position, earlier position, was that the elections that we held in June of 2022 were in accordance with our constitution. Some people got elected, I don't know, I presume, and those people, now they've said, election commission says no, this is not proper election. They say, okay, we go and hold another election. What happens to those people? Were they heard? Because वो भी तो उनकी भी तो vested right हो जाएगी ना, unless they are the same group of people, the same identical people who again got elected. Because if they are maintaining that are they conceding that the elections of June was not in accordance with law, or are they sticking with the story, or saying, okay, fine, we set aside these elections? Has the political party set aside its own elections and said we'll hold it again? Otherwise, वो लोग कल को वो petition file कर देंगे, जी मैं तो elected हूँ, ये कैसे आ गए हमारी जगह? मतलब इस पे कोई बात हुई या नहीं हुई? Before the Election Commission, they took the position that since you have pointed out all these defects, in order to cut the controversy short, we will recall those elections and hold elections afresh. That's how the second election came about. वो वाले भी अनपोस्ट थे? Those were, yes, my lord, and copy. They were, the instructions are they were unopposed. तो आपका इनसे बहुत पुराना झगड़ा चल रहा है इलेक्शन पे? Sir, this was going on since the time when this particular party was the party in administration. The first reminder issued to them to hold elections, because the period has expired, was issued on 24th May 2021. 24th May? May 2021. फिर आपने कहा कि चलो आपको एक extension time दे देता हूँ. Sir, that we are being benevolent. They sought an extension on the ground that due to COVID. क्या की हुकूमत कब तक थी? Sir, their government continued till 10th of April 2022. अच्छा, तो ये उस जमाने में ये हुकूमत में थे? Yes, sir. तो वे इलेक्शन क्यों नहीं कराए? Sir, they said we were unable to hold the elections on account of the pandemic, COVID-19, and therefore the Election Commission gave them a 1-year extension to hold the elections. Your Lordship will see. जब वो हुकूमत में थे तो आपने उनको रिलीफ दे दी?
My lord, we gave them a show cause notice while they were in. Show cause notice के बाद में कहा चलो भाई एक साल बात कर लो. Yes, my lord. But while they were still in government, on 24th of August 2021, we wrote to them and said that you were granted a 1-year extension and now the due date is coming and hold elections. Then we sent them a reminder on 7th. जरा बताइए ये जो आप refer कर रहे हैं कहाँ हैं? My lord, yes. The first letter your lordship will see is 24th of May 2021, which is at page 391 of your lordship's paper. Just for disclosure, My lord. Mr. Makhdoom Ali Khan, My lord. we reached out to the Lahore High Court to find out the status of WP 332 of 23 and the other matter, and both are pending adjudication before a 5-member bench. Yes, my lord. This is just now got it. The order that your lordship last saw, they were adjourned to 12th of January, which is नहीं ये today. तो आज स्टेटस हमने कहा हो सकता है कभी डिसमिस हो गया हो कुछ हो गया हो ना नॉन प्रोसिक्यूशन या कुछ तो आज तो this. Now please take us to the letter of 24th of May. My lord, that is at page 391. I am directed to refer to the correspondence resting on the subject. Attention. एक सेकेंड 3 My lord, page 391. आप जरा पार्ट भी बता दिया करें. Sir, I'm sorry, part 2. हाँ 391 में 391 Page part 2. जी. I am directed to refer to the correspondence resting on the subject. Attention is drawn towards sections 208, 209 and 215 of the Elections Act 2017, read with Rule 158 of the Election Rules 2017, thereof whereby a political party is to conduct intra-party elections in accordance with its constitution, a mandatory requirement under the law to sustain, retain the already allotted election symbols, and to contravene with prescribed legal provisions, a political party shall be issued show cause notice by the Election Commission, and election symbol whereof shall be withdrawn, enabling the party ineligible to obtain an election symbol for the elections to come. Foregoing in view, it is advised that intra-party elections of your political party may be conducted timely in a manner provided in party's constitution to avoid being declared ineligible as given in law. If your lordship graciously turns but इसमें तो इससे भी पहले चल रहा था. Says I'm direct to refer to the correspondence resting on the subject. Yes. So there was some earlier correspondence. And till when was this political party in government? So this party was in government till 10th of April 2022. 10th of April. So this letter was written while they were in government. Yes, my lord. And this, so the allegation that you were somehow under pressure, are you making that point here? My lord, no, we are pointing out just to your lordship the history. In the behest of the caretaker government, you're doing this? No. My lord, all that the ECP is saying before your lordship is that this is a matter, this is a background to how the first... जवाब किधर दिया उन्होंने? My lord, we didn't get satisfaction to this, so we issued a show cause notice, which is at page 392. जवाब तो दिया हुआ है ना उन्होंने. My lord, yes, they gave. They wrote that. 2019 में था ना? जी सर. If your lordship नहीं ये 2021 का सर लेटर है. नहीं मगर कोविड तो COVID-19 कहते हैं ना 2019 का है ना? जी. चले 19-20 निकल गया तो 21 में आप मांग रहे हैं election. And then they give a reply. वो किधर है? My lord, that is at page 393. 393. ये जरा पढ़ लें. जी सर. इसका relevant portion पढ़ लें जो भी पूरा पढ़ना चाहें. That with regard to the paragraph 2, that with regard to the concern raised by ECP in the instant show cause regarding failure of PTI, provision of certificate pertaining to conduct of intra-party elections due on 13th June 2021, it is submitted without prejudice that due to COVID-19. तो ये मान रहे हैं कि due हैं. जी सर. And they were due as of 13th June, according to them, that due to COVID-19, all activities where public gather are restricted. It is due to this reason that holding of various events of the party, including intra-party elections, were affected, and many activities could not be carried out as per schedule. If your lordship may graciously turn the page, last paragraph,
in light of above, you are therefore requested to withdraw show cause notice and a time period of 1 year, subject to permission to hold large public gatherings by NCOC, and government may be granted to PTI for holding of intra-party election in the interest of justice, please. Then, my lord, ये 1 year कब होगा एक खत्म? Sir, we give them time, and there's the next letter on 24th August 2021. Next letter, my lord, at page 395. Paragraph 2. As per record, the last intra-party elections of Pakistan Tehreek-e-Insaf were conducted on 13 June, and the tenure was fixed 4 years as per Party Constitution 2018. 4 years था या 3 years था? Sir, according to the current Constitution, it is 3 years. They are mentioning 4 years as per the Constitution of 2018. This is the 2019 Constitution which your Lordship have before you. Later on, amended Constitution submitted in the year 2019, and according to its sunset clause 4.1, the party has to conduct the intra-party election within 18 months of the adoption of the Constitution of the party, and as such the target date was 1st November 2020. However, the Honorable Election Commission has accepted your request and advised to conduct intra-party elections of the chairman and other office bearers well before 13 June 2022. And then you are overtly generous. We give them a 1 year. You were overtly generous because they were in government. My lord, I mean, they are themselves accepting that 1st November 2020 is the target date, and you said, "Chalo 2 saal le lo." Sir, because of the COVID-19 restrictions, because they had pleaded in the previous letter, asked for 1 year, that is why the Election Commission gave. There is no other explanation. Parties से आप भी generous थे आप या नहीं? Sir, 2-4 पार्टी और भी थी जिन्होंने कोविड की वजह से एक्सटेंशन मांगी थी, and they were granted the extension. That's correct, Your Lordship. तो अब आपने दी 13 जून को. जी सर. फिर इन्होंने इलेक्शन कब किए फिर? Sir, the elections were then held on 13th June. इन्होंने 10 जून को किए. जी, जो आपने कहा कि सही नहीं है. जी सर. अच्छा. And that was also held after we gave them a reminder letter. वो आपने क्यों कहा था कि सही नहीं है 10 जून वाले इलेक्शन? बुनियादी बातें. They were because the elections were to be held in accordance with the Constitution. नहीं, बुनियादी बातें बताइए. There were certain violations of the constitutional provisions of the PTI. आपको पता है point क्या नहीं पता है? My lord, this was the ground urged over there, that several provisions of the PTI Constitution were violated, that several of the persons were not appointed correctly, and that is why that order was issued. That impugned order is before your lordship. It is at page. नहीं, देखिए मखदूम साहब, एक सवाल उठता है जो हमारे जहन में भी है. हम जो जहन में होता है मैं कह देता हूँ, कभी कभी लोग पसंद नहीं करते हैं. हम ये देखना चाह रहे थे कि आपका इनके साथ रवैया जो है अब वो क्या सख्त हो गया है. सख्त कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, सख्त हो गया है क्योंकि शायद कोई वजह से, या फिर आपका यही रवैया रहा है इनके साथ हमेशा से. तो ये खतूत से तो एक चीज तो जाहिर होती है कि आप इनसे कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, और आपने और ये मैंने मान भी लिया कि हाँ बात तो सही है आपकी, हमने इलेक्शन नहीं कराए. इन्हें वजह दी कि हमें 1 साल दे दो. आपने कहा चलो ले लो साल. आपने नहीं कहा कि 3 महीने ले लो, 6 महीने ले लो. भाई आपको क्या पता था कि कोविड 1 साल और चलेगा या नहीं चलेगा. बहरहाल आपने बहुत जेनरोसिटी का जाहिर की, तो 1 साल आपने इनको दे दिया. फिर उन्होंने इलेक्शन किया, आप कह रहे हैं फिर वो भी इलेक्शन सही नहीं हुआ. ठीक है, तो ठीक है, बस ये हम देखना चाह रहे थे कि ये आपका एटीट्यूड कैसा है, कि अभी बदला है या पुराना है. क्योंकि उस वक्त एक अहम बात जो सामने आई है वो ये, उस वक्त ये सरकारी पार्टी थे, अब शायद नहीं है सरकारी पार्टी. तो उस वक्त आप इनको अकोमोडेट कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया 1 साल का, मगर फिर भी रिकमेंडेट किया. मगर आपने इशू रेज किया हुआ है इलेक्शन का जब से इनकी सरकार थी. My lord, yes. And the other thing, my lord, that
At the very time, in the first letter which I read out before your Lordship of 24th of May 2021, at page 391 part 2, we had said that the consequence of not holding this election, ये बात भी आप कर चुके हैं। इनको उस वक्त जब ये पार्टी इन पावर थे, इनको कहा कि आपका सिंबल वापस ले लिया जाएगा अगर आप इससे कंप्लाई नहीं करते। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। उन्होंने इस बात की मुखालिफत नहीं की, आपके पास ये हक है ही नहीं। दैट जुरिसडिक्शन दे डिड नॉट कॉन्टेस्ट। उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात सही, इलेक्शन नहीं किया, अब 1 साल दे दीजिए, हम कर देंगे। जी ठीक, समझ गए। आगे बढ़िए, कोई और पॉइंट? द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन द इलेक्शंस वर हेल्ड फर्स्ट टाइम राउंड, वी पास्ड एन ऑर्डर, they challenged that order as your lordship saw. तो हो गया सारा। जी, वो सारी बात हो गई। Don't repeat yourself. Yes, they passed that order. Then they appeared before the election commission. They resigned from that position and they said we'll hold another election. Now and that time, then they have thereafter proceeded to hold the second election. As a result of the second election, the election commission has raised certain objections and passed the order. What is the crux of that order? The second order which was impugned before the Peshawar High Court. एक आपने बात की कि आपने जो अपने आइन में जो लिखा हुआ है, जो 7 मेंबरान का बोर्ड वो आपने बनाया इन इलेक्शन करने की। दूसरी बात आपने कहा है कि एक अजीब बात है कि पूरे पाकिस्तान में सभी अनअपोज्ड आ गए। तीसरी बात आपने कहा कि आपने ये तो बताया नहीं अपने मेंबरान को इलेक्शन हो कहाँ रहा है, नॉमिनेशन पेपर कहाँ है, कितने नॉमिनेशन फाइल हुए, मतलब कितने लोग मौजूद थे। तो ये आपकी बातें, इसके अलावा जो बातें वो बताइए। जी सर, हमने इनको ये कहा कि आपके रिपीट ना करें। नो माय लॉर्ड, वी सेड दैट अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन यू कुड co-opt if there was a vacancy in the membership of the commission, but if the chairman ceases to be, the chairman has to be elected in terms of your own constitution, and the present chairman of the Federal Election Commission of the PTI is not an elected person. He has been appointed by Mr. Umar Ayyub. You claim कहाँ लिखा है? आइन में इनके कहाँ लिखा है? in the impugned order, in the order में नहीं, इनके आइन में पहले दिखाए ना शिक आइन, फिर इम्प्यूग्ड ऑर्डर पे जाइए, या आपके कानून की बात कर रहे हैं, इलेक्शन एक्ट की? No, my lord, I am showing your lordship from their constitution, which is at page 124, and if your lordship graciously proceeds to page Federal Election Commission, secondly, again taken my paper. My lord, at file 1, page 192. Yeah, 1. ये मेरी नौकरी, आपको क्या चाहिए? Sir, your lordship will see functions, and the election commission marked the provision. Article 9, नहीं, किस आर्टिकल? page 192. इसको दिखाना मुझे पेज 192. 9 तो इधर है ही नहीं। अच्छा, रोमन 9 जी, फेडरल, ये तो हम पढ़ चुके हैं। My lord, the Secretary General shall propose with the approval of the chairman. Yes, my lord. The Secretary General shall propose with the approval of the chairman the names for all the 6 commissioner and chief of the Federal Election Commission from outside the membership of the National Council, and that's the method of how they are elected. Paragraph 5. The commission can co-opt associated members for specific jobs departments and may co-opt members for any vacancy arising out of resignation or incapacitation of a member. 6. In case of the resignation or incapacitation of the Chief Federal Election Commission, full above mentioned procedure need to be adopted, which is the procedure of election given in paragraphs 2 and 3 above. So while a co-option, तो आपका कहना है कि उमर अयूब साहब के पास कोई इख्तियार नहीं था? That's the submission, my lord. क्या करना चाहिए था उनको? My lord, if the chief election commissioner has resigned, the election had to take place in terms of paragraphs 2 and 3. खत में क्या लिखा है? उन्हें रिजाइन किया या उनको रिमूव किया? It says that Mr. Gohar Khan has resigned and therefore you are being appointed. Page 89. Page 89, part 1.
following the resignation of Barrister Gohar Khan on 27th November 2023, it is notified that Mr. Niazullah Khan Niazi is hereby appointed as CEC, Pakistan Tehreek-e-Insaf, with immediate effect. अगर आप ये भी कह रहे हैं कि ये सेक्रेटरी जनरल कैसे अपॉइंट हुआ उनका, and that is the other point which we make in that order by the Election Commission, that the Secretary General himself could not have been appointed in this manner, and in any event on our record Mr. Asad Umar still continues on as our Secretary General. As the Secretary General. On our record Mr. Umar Ayub was never brought on Election Commission का एक तो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि सेक्रेटरी जनरल चेंज हो गया. My Lord, because the list of party bearers is filed with us, and we need to know who is there. law के तहत? My Lord, किस law के तहत? My Lord, under the Election Act, they have. हाँ, Election Act के जरा relevant provisions बताएं हमें. क्योंकि we've seen their constitution, we want to see now the law. Yes, my Lord. If your Lordship may see, the first provision in this respect is 200. Your Lordship will see Chapter 11, Political Parties. And then this is how 201, how the political party is constituted. A political party shall formally. relevant बात बताएं. जी सर. सर B में आप देखें organizational structure of the party at the federal, provincial and local levels, whichever is. कौन सा सेक्शन में पढ़ रहे हैं आप? 200. My Lord, 201. Section 200. 200 या 201? 201 sir. 200 is just who will be a political party. 201 is shall constitute, formulate. So it's a requirement of the law. A political party shall formulate its constitution by whatever name called, which shall include the aims and objectives of the political party. B, organizational structure of the political party at the federal, provincial and local levels. Then membership fees, designation and tenure of the office bearers of the political party. Criteria for receipt and collection of funds for the political party. And F, my Lord, procedure for 1, election of office bearers. 2, power and function of office bearers, including financial. Subsection 3 है मेरे ख्याल में. My Lord, any change in the constitution of a political party shall be communicated to the Commission within 15 days of incorporation of the change, and the Commission shall maintain updated records of the constitutions of all the political parties. Constitution, are we here referring to the constitution of the body or yes, constitution document? My Lord, in my submission, this sounds like the constitution of the body, constitution of a political party. Yes. तो ये है 2013. Yes. तो हमारा सवाल था क्या क्यों बताएं आपको, तो 201 ये लाजिम करता है उनको कि बताएं आपको. Yes, ma'am. 3. And then 202, how the political parties are enlisted. And then if your Lordship may proceed. तो ये आपसे राब्ता पॉलिटिकल पार्टीज का मुतवातिर होना चाहिए. ये जो आप कह रहे हैं ये सिर्फ आप इनके लिए तो नहीं कर रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कर रहे हैं. That's true for every political party. नहीं, आपने ये तो नहीं किया इम्तियाजी सलूक इनके साथ. No sir, no, not at all. We have required this of every political party. Then your Lordship will see section 206. This is the selection for elective offices. Then 207, functioning of a political party. And that requires them to convene a general meeting every year. It requires that they shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels. Then your Lordship will see 208, the office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party, provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. Any member of a political, then who can participate, my Lord? Any member of a political party, subject to the provisions of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting election for any political membership की details भी आपको देना होती है या नहीं? Sir, office bearers की details देते हैं ये. Membership की जरूरत नहीं है. Initially देते हैं. Right, when the party is enlisted, at the time of its enlistment, they provide, because the requirement is that they should be at least have 2,000 members before it can be enlisted as a political party by the Election Commission. और 209 क्या कहता है?
200 सर अगर 208 एक बार और देख लें सर, a member of a political party shall subject to the provisions of the constitution of the political party be provided with an equal opportunity of contesting elections for any party office. Subsection 3. आपका बुनियादी तौर पे ये केस है 208(2) का कि आपने अपने मेंबरान को ये मौका नहीं दिया कि वो इलेक्शन लड़ सके. And in respect of Mr. Umar Ayyub, your lordship may see also subsection 4, the political party shall publish the updated list of its central office bearers and executive committee members by whatever name called on its website and send the list and any subsequent change in it to the commission. ये वो तो चले एक टेक्निकल चीज है ना, दो बातें हो गई ना. एक होती है बुनियादी हकूक. जी सर. बुनियादी हकूक आइन में भी दर्ज है, आर्टिकल 17 में भी, इलेक्शन का हक. अब एक टेक्निकल चीज है कि उन्होंने नाम भेजा नहीं भेजा, चलें भाई उसको तो आप नजरअंदाज करना चाहें या ना करना चाहें मुझे नहीं पता, मगर एक बुनियादी हक है हर शहरी का कि वो अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को वोट करे, और ये बुनियादी हक हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर का भी है कि वो वोट का हक इस्तेमाल कर पाए और लड़ सके इलेक्शन किसी ऑफिस के लिए. नहीं तो फिर अगर हम ये हक छीन लें तो फिर तो डिक्टेटरशिप नेशनल लेवल पे भी हो जाएगी और निजी लेवल पे भी हो जाएगी. जी मेरी मर्जी मैं जो करूं. And that is why, my lord, in section 209, the requirement. ये सब political parties से आप बराबर का शुरू कर रहे हैं ना? Yes, my lord. There is. In my instructions are that. मगर इतना माइन्यूटली और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी आप रिकॉर्ड इसी तरह देख रहे हैं इतना माइन्यूटली. Yes, my lord. सर ये अभी वहाँ भी अनअपोज आते हैं या वहाँ आपने. My lord, and we have delisted today. अनअपोज जो आ रहे हैं. अभी हमने एक delisted का केस अभी देखा था. हम अभी मगर एक बात जो आपके में शायद जाती है कि आपने ये इशू उठाया था जब पीटीआई खुद हुकूमत में थी. तो ये एक मेरे ख्याल में एक वजनी बात है. ये नहीं कि एकदम से हुकूमत से गए तो आप इनके पीछे पड़ गए. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मेरे आई डोंट नो मे बी. My lord, that is our respectful submission and reply to the query of my lord Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar for various violations. Even today 13 political parties have been delisted. And one and the earlier part of the day. चलें खैर उसकी बात ना करें, कल को हमारे सामने होंगे. जी सर. तो वो मगर ये बस हम देखना चाहते हैं कि भाई आपका ये कोई पिक एंड चूज वाला एटीट्यूड ना हो. जी सर. अच्छा तो असली बात इलेक्शन की आ गई ना बस. जी सर. एंड देन ये माइनर चीजें तो चलें ठीक है. वो अनअपोज आने की जो रवायत है ये सिर्फ इन्हीं के पास आई है या और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी अनअपोज इलेक्शंस हैं? दूसरी और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो My lord, I will take instructions in specific. पीछे इलेक्शन वाले इलेक्शन कमीशन ये अनअपोज जो है और पार्टीज भी आते हैं या सिर्फ यहीं पे ये रिवायत कायम हो गई है और आपकी दूसरी पार्टीज में इलेक्शन होते हैं प्रॉपर या वो भी इसी तरह होता है? रिकॉर्ड देख के फिर बता सकते. जरा चेक कर लीजिएगा कल. चलें आप देख लें. The submission is, my lord, that the objection. Let's finish with the law now. Yes, my lord. Section 209. A political party shall, within 7 days from completion of the inter-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that the elections were held, and it's very important, my lord, in accordance with the constitution of the political party. And this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable in accordance with the constitution of the political party. And if your lordship may then straight away proceed to section 215. 215. My lord. Eligibility. Yes, my lord. Anything notwithstanding. ये आपको भेजा उन्होंने सर्टिफिकेशन? My lord, they did. वो किधर है, किस सफ़े पे है? And that is on the basis of that we proceeded to issue them a notice, and thereafter these proceedings took place. ये 440 या 441 program. My lord, if your lordship may graciously please. 440. This is, my lord, page 440, letter to the ECP from PTI stating that the intra-party elections took place on 2nd of December 2023. This is in part 2. एक सेकंड. नहीं ये जो इनका फॉर्म है ना, ये दोबारा बताइए. My lord, this is सर्टिफिकेशन. फॉर्म page 440, part 2. फॉर्म 65 पेज 66 पे है. जी सर. तो पार्ट 1 देख लेना, वो जो चीफ साहब पूछे पेज 66 है पार्ट 1 पेज 66.
ये सर्टिफिकेशन, हाँ ये फॉर्म 65 डालना है ना, ये फॉर्म ये 65 किधर है? फॉर्म 65 ये यही है? नहीं यही फॉर्म, जी जी जी, ये फॉर्म वाली बुक है हमारे पास रूल्स में। जी सर, ये रूल्स के अंदर प्रेस्क्राइब फॉर्म है, दैट इज देयर इन द रूल्स। हाँ ये वाली फॉर्म 65 निकालिए। रूल्स की किताब में है ना फॉर्म? जी सर, दिस इज अंडर रूल 158(1). 168 पे फॉर्म 65। जरा ये पढ़ लें। My lord, yes. Form 65, certificate regarding intra-party elections. I such and such office. नहीं, इनका एक्चुअल वाला पढ़े ना, पेज 68 पे। Page 68, 66. This is Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the Constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1. The date of the last intra-party elections, 13/6/2017, declared invalid. The names, designations, and address of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of NICs elected at the federal, provincial, and local levels, wherever applicable. The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of party offices. ये किधर है? ये तो सर, because this नहीं इन्होंने लिखा है, they have said they are unopposed, so therefore. जी यही तो, ये कैसे कह रहे हैं कि the number of votes cast and the number of votes secured, ये कैसे कह रहे हैं? ये कौन सा इसके साथ मुंसलिक किया है इन्होंने? Nothing, because all the certificates. क्योंकि देखिए एक जगह तो आपने पढ़ा था कि unopposed आए, इधर ये तो कह रहे हैं कि नहीं, votes cast हुए और number of votes secured by each candidate. If your lordship takes a look at what they have filed, उधर तो नहीं लिखा है कुछ. That is from page 79 onwards. Your lordship, sorry, even before 3 का जवाब किधर है? रोमन 3 का सर जो इनका अपना डॉक्यूमेंट है वो पेज 78 पे है, अगर आप देखिए 8. So under the ये तो सारा उन्होंने लिख दिया अनअपोज, वोट्स के नीचे अनअपोज लिखा है. बैरिस्टर गौहर अली खान, चेयरमैन PTI, अनअपोज. रोमन 3 है, वो कहता है, और आई थिंक ये फॉर्म 65 भी यही कहता है कि एक्चुअल वोट्स होंगे ना, कि आपको 10 वोट मिले, उसको 100 वोट मिले, जो भी होता है, total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of party offices. तो ये पेज 79 पे भी देखिए, जो इस वक्त बात चल रही थी उमर अयूब खान साहब के हवाले से कि वो कब इलेक्ट हुए हैं, वो तो इस वाले में पेज 79 पे लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन सेक्रेटरी जनरल अनअपोज. ये तो इलेक्शन के बाद आए ना? जी जी. तो उससे पहले सेक्रेटरी जनरल का जो सवाल था वो कब अपॉइंट हुए थे? सर, देयर वाज अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स. नहीं, ये देखिए ना, इसमें सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स की जो लिस्ट है ना पेज 79 पे. जी सर. उमर अयूब खान, डेजिग्नेशन सेक्रेटरी जनरल, वोट्स अनअपोज. जी सर, दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 2nd of December. योर लॉर्डशिप इज राइट. उससे पहले साइन कर रहे हैं ना सेक्रेटरी जनरल की. जी सर. मुझे एक और खत दिखाया था आपने, वो दिखाइए जी कि आई रिजाइन, तो इनको अपॉइंट कर रहा हूँ. ये गौर साहब की सिग्नेचर के बाद 86 पे तो नहीं, आपने अभी दिखाया था मैं कहीं. तो उससे ये क्वेश्चन लिंक हो रहा था ना कि आपने कहा उनकी अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसीजर बताया नहीं है, या अपॉइंटमेंट का कोई लेटर नहीं है रिकॉर्ड, तो इसलिए ये सवाल आपसे. आपने अभी हमें बताया था, वो एक खत था. I'll just give your lordship the page 89. Sorry, 86 नहीं. Page 89. Part 1 again, my lord. ये देखें ना, ये है 28 नवंबर 2023 का. ये इन्होंने अपने, मतलब ये तो पहले का है. जी सर. इलेक्शन से पहले का. तो ये कब बने, कैसे बने, ये नहीं पता आपको? सर, he was never. Your lordship has seen the law. आपका मौक़िफ़ ये है कि असद उमर ही आज सेक्रेटरी जनरल हैं. जी, चूंकि दिस इलेक्शन, और अगर वो पार्टी छोड़ गए या नहीं है तो कोई तरीकेकार होना चाहिए किसी और को अपॉइंट करने की, जो इलेक्शन होना चाहिए. जी सर. एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो पहले उनका इलेक्शन होगा,
फिर वो इलेक्शन फेडरल इलेक्शन क्या होता है, फेडरल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे और 6 और इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे जो बॉडी को बनाएगा जिसके तहत इंतखाबात होंगे। yes, चलेगा ना मामला? Yes, madam. Because what your lordship have from page 78 to 87. ये सवाल तो इनके लिए हम पूछेंगे इनसे, आप कह रहे हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने, अब हम ये सवाल पूछेंगे कि किया या नहीं किया, वो सुन भी रहे हैं, ठीक है। और आपका कोई अगला पॉइंट? So we show that from 78 to 87 they were all unopposed. Our submission was, and the election commission order which is there with your lordship. एक और बात जो है जी, आपने कहा ये हमने अज खुद नहीं किया, अज खुद भी आपने किया था और इनके अपने कंप्लेंट्स भी आए। जी सर। इनके अपने फाउंडिंग मेंबर्स वगैरह की सर, हमें भी तो इलेक्शन लड़ने दो सर, बेशक हार जाएं। अच्छा मुख्तुम साहब, ये इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाए उनका तो हाउ इज दैट पब्लिसाइज्ड? हाउ वुड एवरीबडी कम टू नो के इलेक्शंस हो रहे हैं इनके? व्हाट्सएप फैसिलिटी तो सबको अवेलेबल नहीं है। पब्लिक नोटिस हुई है, कोई अखबार, कोई कानून में कोई शिक है या इनके अपने रूल्स में कोई शिक है? The law only provides that they should be held in a fair and transparent manner. में कुछ है? Constitution में I haven't come across a provision which provides a particular method, but the law which exists, the law says they should be in a fair and transparent manner where persons should be given a right to participate, and that's there in 208 which we, and 209, not 209, 208 which we just read out to your lordship. अच्छा, कोई स्पेसिफिक शिक नहीं है रूल्स में क्या आपको अखबार में नोटिस देना है या क्या करना है? No, my lord, that's not it. Conducted in accordance with their अपने रूल्स, because they have to conduct it, my lord, in accordance. रूल्स में, आपके इलेक्शन रूल्स में कुछ ऐसी बात है? इलेक्शन रूल्स के अलावा इनके अपने रूल्स भी लगे हुए हैं जी। वो हाँ, इनके अपने रूल्स हैं, वो देखिए अभी नजर पड़ी थी मेरी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखे ना इनके। जी जी सर, बिल्कुल लगे हुए। But our submission is that these rules were to be made by the election commission itself for its purposes. It couldn't change the party constitution. They couldn't, under these rules, bring in someone who was not entitled to come in through the party constitution. rules? Provision कहाँ है? Constitution में। अब्दुल साहब, अगर इन केस इन द मिडल कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिस तरह इस पार्टी के साथ हुआ, इन द मिडल इनके सेक्रेटरी जनरल चले गए उमर असद साहब, impression यूँ मिल रहा था as if he has left the party position, not the party. तो ऐसे के लिए कोई है इनके रूल्स या एक्ट में इनके कुछ ऐसा है कि कोई टेम्पररी अरेंजमेंट हो सकती है? The Constitution, your ladyship, deals under section 512 on page 141 with the election of office bearers, and then कैसे आता है? Party which my lord Mr. Muhammad Ali Mazhar was referring to, they, my lord, are framed by the election commission under article 9 paragraph f.1 at page 192. हाँ, उसमें देखें इनके रूल्स के अंदर कोई तरीका दिया है पब्लिसाइज करने का? No, your lordship, because they develop their bylaws, internal working in accordance with the constitution and notify the where is the document of rule? मुझे वो बताया ना, वो मिल नहीं रहा, वो इसमें है इसमें rules set page 99. They begin with 98 and the they're not part of it. ये तो 99 ये है ना election rules इनके 98 के ऊपर हैं। ये आप देखिए, your lordship will notice two things immediately. They
have been brought forward by them now. They are not a part of their constitution, and the election commission, they were not submitted to the election commission. उसमें कुछ फर्क आ गया है? Sir, yes. Because the statute says the election has to be held in accordance with the constitution, not in the bylaws. Because your lordship, देखेंगे अगर ये election rules 2020 हैं ये, sir, these are PTI own rules. My lord. इसमें इन्होंने कहा है कि वेन्यू को हम अनाउंस भी करेंगे और लोगों को बताएंगे भी कि लिबर्टी टू चूज वन वेन्यू फॉर होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस और सेपरेट कीपिंग इन व्यू द सिक्योरिटी एंड अदर अरेंजमेंट्स एज माइट बी रेलेवेंट. द वेन्यू में बी नोटिफाइड सेपरेटली और एज पार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोग्राम. तो ये जो वेन्यू की बात हो रही थी अभी इससे पहले वो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है. नॉमिनेशन के लिए रूल 6 में एनी वेरीफाइड वोटर में propose or seconded the name of any candidate as chairman. These are illegible copies. Chairman, on form 1. The nomination form may be filed by the candidate, by his proposer and seconder before the returning officer. ये है इसके अंदर rules 20 के अंदर. Any verified voter may propose or second the name of any candidate. नहीं तो आप कह रहे हैं कोई नया मंशूर इनका बना है? No, my lord, what happens is that आप कह रहे हैं मैं मानता नहीं हूं मगर कोई नया मंशूर है. No, I'm saying, my lord, the constitution is the constitution of 2019. The law requires that the elections should take place in accordance with the constitution. वो तो हम समझ गए मगर फिर आपने अभी कुछ जिक्र किया कि इनने कोई नया मंशूर इनका मौकिफ है. These rules of 2020 are framed by the election commission for its own internal working. That is there on page 192 of your lordship's file. They specifically say 192. Under the heading functions after number 6. 192? Page 192, part 1, my lord. वो तो फेडरल इलेक्शन कमीशन. जी सर, उसका अगर आप ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है. सर, if your lordship looks at the bylaws को बता रहा है. These are not the rules. Bylaws for यही है. Sorry, I missed the point. Sir, the rules which are here or the bylaws which are here. नहीं जरा एक सेकंड जरा वजाहत कर दीजिए. आप जब रूल्स बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? No, PTI की own PTI rules. पीटर आप ये वजाहत कीजिए ना जरा. My lord. जी. So the under the heading functions F, your lordship will see F.1. The Federal Election Commission shall develop the bylaws for its internal working in accordance with the constitution and notify the same on the website. तो आइन इनका वही है. आइन वही है. आइन नहीं बदल सकते. अपनी इंटरनल वर्किंग के लिए नहीं बदल सकते हैं. कोई बदलना चाहे बदल. मतलब then they have to amend it in accordance with the procedure. Amendment file करनी पड़ेगी आपके पास. And then they have to file. What turns on this point of yours? My lord, that these rules as such will not trump the constitution. Which rules are these? These the rules framed by the election commission of PTI. Where are those? Those are at page 98 onwards in part 1. So this probably will be their defense. I take it. This may be their defense. They rely on Rule 28. This, I presume, will be their defense, correct? My lord, yes, and it says, your lordship may see, this probably... What comes in the way of fair and free elections with these rules? What is so offensive about them? My lord, that you don't like them? My lord, I'd like to point out to your lordship Rule 28. In case of any vacancy in the Federal Election Commission, including Chief Election Commissioner, the Secretary General or the Chairman shall notify Ad Hoc Election Commission to propose to comprise of Chief Election Commissioner and as many members as may be necessary for holding intra-party election. So इसकी तारीख क्या है इनके रूल्स की? 2020 date. They simply say 2020. We don't know the date, my lord. Even if we read this, how does it change anything? My lord, they are not relying on these rules because this is regarding ad hoc. They don't say I'm an ad hoc commissioner. They're saying I'm a full-fledged commissioner. In the ECP relied on 28. Sir, should notify ad hoc election commission. So this is not their case of ad hoc. I make this submission because before the ECP, they relied on this Rule 28 to say. I don't understand. To say that the fallback position is that you could regard him as an ad hoc
दोबारा पढ़िए जरा आहिस्ता से. In case of any vacancy in the Federal Election Commission, including Chief Election Commissioner, the Secretary General or the Chairman shall notify Ad Hoc Election Commission to comprise of Chief Election Commissioner and as many members as may be necessary for holding intra-party election. तो पहली बात तो वैकेंसी होना है, अगर हम इसको मान भी लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग. दूसरी बात है सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे, मगर फिर भी वन मैन शो तो नहीं होगा, फिर भी मेंबर्स तो होंगे ना फिर भी. एंड एज मेनी मेंबर्स एज मे बी नेसेसरी. यस माय लॉर्ड. तो वो कह सकते हैं जी चलिए हमारे पास 6 नहीं है, 4 कर लेते हैं. For instance, I don't know. There are two submissions over here, my lord. One, that even this Rule 28 does not envisage a one-man commission. The second submission is that under Chapter 9 on page 192, the requirement of the Constitution is that such members are to be co-opted by the Commission itself. That's one. And secondly, that insofar as the Chief Election Commissioner is concerned, he can't be co-opted. He has to go back to the electoral process. So they are resting the case on Rule 28 or some other one? Before the Commission, they rested on Rule 28, and the Commission, therefore, in its order says... No, anything else which may save them, help them, which you are opposed to? My lord, your lordship may see page 61, part of the Election Commission's order. No, just tell us, we don't want to see it. My lord, there they rely on it. And let's be fair, is there anything here which will help them? My lord, our submission is no. Our submission I'm is... asking as counsel, not as representing ECP. My submission as counsel is that the rules insofar as they are inconsistent with the Constitution... Let's say they are the proper rules. How will it help them? Please tell us those provisions. Our submission is that even if they are, then under Rule 28 itself, the body has to be an election commission. It can't be one person. So they have to explain to you. दूसरी बात आप ये ad hoc नहीं कह रहे हैं कि मैं ad hoc हूँ. That's the third one. हो सकता है कि जैसे हमारे कलीग ने पूछा कि भाई कभी-कभी हो जाता है कुछ for various reasons, इमरजेंसी ये वो वगैरह, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो वो ad hoc चलिए उन्हें अपॉइंट कर दिया, मगर यहाँ वो ad hoc का केस ही नहीं है, तो आप उनका केस क्यों प्लीड कर रहे हैं? I am only pointing out that in paragraph 16 of its order, the Election Commission notes that they admitted... I don't think that's a relevant point. No, the Election Commission noted that they admitted that this was in violation of the Constitution. Have you concluded? My lord, may I draw your lordship's attention to a few paragraphs of the Election Commission's order? I may not read it, your lordship. Before that, can you show us the order and the challenge again now? The High Court order, my lord? Ji. My lord, yes. That the impugned order of the High Court is at page 28. The operative part starts at the foot of the page for the reasons, part 1, page 28, part 1, for the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein. Yeah, but where do they say anything about the elections? About? In the whole dispute, as I've understood it, I may have understood everything wrong, is the validity of 2nd December election. Where is the declaration of the High Court saying that they were in accordance with law or their constitution, or they were not? They don't say anything, my lord. They simply... First you have to hold that, then whether the symbol of bat will be given or not, that's a subsequent relief. First the initial declaration has to be there. Where is that? That is not... Let's read it again, the whole order. We hold and declare that the impugned order of the Election Commission of Pakistan dated 22nd December 2023 be passed in case number
as illegal, without any lawful authority and of no legal effect. But that still doesn't mean that there has been an election. No, it doesn't. आपका order उड़ गया. अब number 2 पढ़ें. The Election Commission of Pakistan is directed to forthwith publish the certificate filed by the petitioner on its website in terms of Section 209 of the Election Act 2017. इससे पहले declaration कहाँ है? Election were in accordance with law. There is none, my lord. So this will only follow that declaration. There is no such declaration. Yes, the elections were held proper, whatever, and then issue the certificate and issue the election symbol. But I find that declaration missing. That is missing. My lord, I can only presume. They presume to be acting. The presumption appears to be that under 209, under Section 209, once the certificate is given, that is conclusive of the matter. The Election Commission cannot see whether the elections were fair or foul, proper or improper, in accordance with law or otherwise. जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं. देखिए, इस सब चीज का जहां तक मैं समझ चुका हूँ, कुछ चीजें टेक्निकल है, ये करो, वो करो, ये कागज फाइल करो, सेक्रेटरी जनरल ये फला, चले वो हम सब नजरअंदाज कर देते हैं. एक बुनियादी चीज है जमहूरियत मुल्क में भी होना चाहिए और जमहूरियत पार्टी में भी होना चाहिए. ठीक है, आपको टॉलरेट करना होता है, गिव एंड टेक, कभी आपके मुखालिफिन भी आ जाते हैं कभी कभी. तो बुनियादी बात तो जमहूरियत की है. आर्टिकल 17 तो यही कह रहे हैं ना. तो आर्टिकल 17 का डिक्लेरेशन तो दें. हाई कोर्ट आपने कहा ये आपका इलेक्शन मुस्तरद हम करते हैं, हम इसको नहीं मानते. ठीक है, आपने गलत कर दिया, तो हाई कोर्ट फिर इसको ठीक करे ना कि नहीं ये इलेक्शन सही थे. That finding is not there. अगर वो इलेक्शन सही थे फिर उनको सर्टिफिकेट भी उनका मानना चाहिए, फिर उनको इंतखाबी निशान भी देना चाहिए, फिर तो सब चीजें फॉलो करेंगी ना थ्रू. That are consequential reliefs, not the main relief. This is the exactly problem that we are facing. Yes. We do not know where their reasons will go. उन्होंने कहा reasons amplify कर सकते हैं, but this is a fundamental prayer which seems to be subject to saying it aloud, so they make a note of it and they address it. Where is that declaration? Because the prayers you will see kindly declare that the elections held on 2nd of December 2023 were in accordance with the constitution of the political party and in accordance with law and the whatever. Because they will amplify the reasons within the ambit of the short order. And then the next step will be and consequential relief, including accepting the requisite certification, issuing the symbol, doing 500 other things if they're required to be done. But those can follow, or even if they're not written, those can be implied. But the declaration can't be implied, or can it be implied? My lord, there is no such declaration. And also, if your lordship looks at the petition, they didn't even pray over there that the elections were held properly. Are you sure? There is no petition. My lord, your lordship will see page 49, which is the prayer clause. Please read them. My lord, hold and declare that the impugned order is without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and as a consequence thereof, set it aside forthwith. Hold and declare that proceedings by ECP to question the validity of the IPEs on the basis of... IPE क्या होता है? My lord, intra-party elections. I don't know why people don't write the whole thing, intra-party elections. On the basis of any objections, filed by any persons were quorum non-judice, illegal and without lawful authority. I can't understand. Hold and declare that proceedings by ECP to question the validity of the IPEs on the basis of any objections filed by any persons were quorum non-judice, illegal and without lawful authority. Why? I mean, anybody can go and complain. So I was just reading why. My lord, because I don't understand this prayer. Shall I next go to the C prayer? Yes. Find and declare that election symbol has been illegal
and unlawfully been withdrawn, which is inter alia violation of fundamental rights of the petitioners, including Article 17 and Article 25 of the Constitution, direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by Section 209, paragraph 3, in the interest of justice, and to restore its election symbol forthwith. In the meanwhile, suspend the impugned order, so on and so forth. They have not sought the declaration. They have not, my lord. The reason appears to be, if your lordship takes a look at page 40. Because if they get a declaration, they may have left out C, D, E. Yes. And I would say the implied praise, and you have to do that once the declaration has been given of free and fair or whatever elections they've held, or in compliance with their own constitution. You see in paragraph A, I think yes. they will, yes, my lord. Obviously they will respond to page 43. I will like to know their response. Authority. My lord, they have challenged the authority as well as the jurisdiction. Now they has to explain us whether the ECP can check the inter-party elections or not at this stage, and whether it was a voidable or that is the central negligible point. I wanted to draw your lordship's attention to ground A. इसीलिए इधर वो ऑर्डर आ जाएगा लाहौर हाई कोर्ट का लर्नेड सिंगल जज का। उन्होंने ये बात की कि ये फ्रेज उस वक्त मैं दे सकता हूँ कि मैं जब स्ट्राइक डाउन कर दूं इलेक्शन एक्ट के कौन से 2 सेक्शंस थे जी 209 and 215(5). वो उनकी वहां तक तो बात अब समझ आई मुझे जाकर के कि उन्होंने क्यों कहा। अब शायद समझ आ रही है बात को। चले आपकी बात हम मौके समझ गए, कोई और बात नहीं है तो हम आगे बढ़े। But may I just show to your lordship ground A? That is the case they are setting up, and that's why they are not seeking the declaration of the election. According to them, ECP has no jurisdiction to challenge the internal appointments of officials of PTI or set aside PTI's intra-party election held on 2nd of December 2023 and declare them void. As such, the impugned order is not sustainable in law. ECP is not a court of law and cannot question the appointment made by any political party or examine the validity of a political party's intra-party election. But doesn't these prayers violate the constitution then? Our submission is yes. Because you are saying something, I'll do whatever I want to do. Yes. Yes. I mean, contrary to my own constitution, I don't know. I would want certainly assistance of Hamid Khan Saab. And be prepared to be clean bold, Mr. Makhdoom Ali Khan. My lord, may I just 2 lines from this page, ground B, last 2 lines. They talk about the role of the Election Commission. Only role is to keep a record of the party's constitution and changes, then keep record of elected officers, record sources of funds and campaign Now finance. can you quickly go through the provisions of the Election Commission in the Constitution of Pakistan? My lord, start from there and proceed with the law. My lord, yes. Quickly. Yes, my lord. Your lordship may turn. I'm sure you're tired standing up, but my lord, please have the luxury of sitting down. But anyway, my lord, if your lordship may graciously take a look at articles 213 onwards is the Election Commission, but the relevant 230 or 230? 213, my lord. 213 on is are the provisions relating to Election Commission. The relevant one over here would be 218. Subsection 3. No, but the whole, ये पूरा chapter elections पे. जी sir. Part 7. Yes sir. And 218(3). 213 and 218, paragraph 3, it shall be the duty of the Election Commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, in accordance with law, and that corrupt. ये तो general elections की बात है. Then sir, inter party election का जिक्र है इसमें कहीं? सर इसमें नहीं है, सिर्फ एक तरह से आता है 219. The Commission shall be charged with the duty of, and if your lordship may turn to clause E, such other functions as may be specified by an act of Majlis-e-Shura Parliament. अब वो जो इलेक्शन एक्ट है उसको अच्छा, तो ये आ रहा है 219 के जरिए. E के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017. या तो उसको चैलेंज करें. यस. अच्छा, एक तो ये हो गया. अब बुनियादी हकूक, इन्होंने 2 बुनियादी हकूक का तस्करा किया है अपनी प्रेयर में. एक है 17 और एक है 25. My lord, on
Article 70. एक जरा सी बात सुन लीजिए ना। 17 कहता है कि हर शख्स को इलेक्शन में वोट डालने का हक होगा और पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक होगा। सर इस पे तो कोई आपकी कोई राय, मनफी राय तो नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, नो सर, नॉट एट ऑल। अच्छा, फिर 25 क्या कहते हैं, सबको आप बराबर ट्रीट करेंगे? सर इस पे भी आपकी कोई? नॉट एट ऑल। नो नो नो। ये जो सिंबल वगैरह का जो जिक्र है, ये सारा इलेक्शन एक्ट में आता है। माय लॉर्ड, सिंबल का जिक्र कहाँ आता है इलेक्शन एक्ट में? इलेक्शन सिंबल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? चैप्टर 12 ऑफ द इलेक्शन एक्ट रूल्स मेरे पास। इलेक्शन 212 के बाद ही है। जी सर। आइन में तो तस्कर नहीं है ना? नहीं सर जी। सर, एलोकेशन ऑफ सिंबल्स इज 214। The Commission shall prescribe a list of election symbols for allocation to political parties, and candidates and the symbols in the list shall be visibly and perceptually different from each other. 215. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local governments on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. If your lordship may see the next provision, a combination of enlisted political parties will get symbols. And then if your lordship may see 5, if a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis-e-Shura Parliament, provincial assembly or a local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. Is it your case that the only reason political parties will comply with any direction of the election commission to hold election is when you hold this stick in one hand? Otherwise, they'll say, we won't hold elections. Otherwise, or is there some other mechanism also? My lord, there is a mechanism that if given the time frame in their own constitution, if they... वो तो आगे पीछे हो सकता है। जैसे आपने अब वो वाली बहस तो हमारे सामने नहीं है। आपने साल दे दिया उनको। उस टाइम फ्रेम पे भी हम उनको सिर्फ फाइन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वो छोटा सा फाइन है, वो दे के आगे बढ़ जाएंगे। But if we want to enforce Article 208, elections within a political party, and 209, then the elections should be in accordance with the constitution of a political party. If we don't have the power under 215(5), then these provisions will be purely advisory in nature. There will be no obligation on political party to comply with it, because this election. मुझे याद आ रहा है वो धरना केस में इलेक्शन कमीशन ने कोई बात की थी, पता नहीं, उन्होंने कहा था कॉस्मेटिक है, फिर उन्हें अपोलोजाइज किया कि लॉ इज नॉट कॉस्मेटिक. आई डोंट नो व्हाट प्रोविजन देयर इज. देयर वाज समथिंग मेंशन्ड देयर व्हिच टुक ग्रेट एक्सेप्शन टू दैट. हाउ कैन यू talk about the law cosmetic? You are bound by the law which gives you the powers also. And that's part of your lordship's judgment, and we'll place that judgment on the record that this is what your lordship. That's not relevant to this case, so is it? My lord, it's relevant to this case, and there are a number of other determinations by this honorable decisions by this honorable court, where this honorable court has said that the election commission is a body which has been created to ensure that elections are held in a fair manner. No, not the general elections. Inter-political party वाले. My lord, intra-party पर भी judgment. वो वाले judgment दीजिए. साहब वैसे इसमें और भी कोई judgment है जिसमें ये the question of inter-party elections were made subject matter of any judgment? My lord, your lordship must see this. In which violation was treated so grave. My lord, if your lordship see where the observations are, this is PLD 212 Supreme Court. PLD 212 Supreme Court 681. PLD 12 ये आपकी बुकलेट में है? जी सर, टैब 8. ये वाली बुकलेट. ये आफ्ताब अहमद खान शेखोव केस आप कह रहे हैं, ये कौन सा? My lord, नंबर कौन सा होता है? My lord, टैब 8. टैब 1. टैब 8. Okay.
It means Workers' Party. Yes, my lord. ये क्या फरमाता है? Irrelevant. My lord, paragraph 42, I'll read 40 later, but 42, the parliament has framed different laws to effectuate the above constitutional provisions and to regulate elections to the national and provincial assemblies. ROPA reiterates and further vests the election. In material terms, is a vast difference between ROPA and the present election act. My these lord, provisions. कोई खास फर्क है वही है. My lord, some of these provisions are new, but otherwise it's only 12. 215, 5 is new, otherwise all the rest. All the rest are the same, my lord, except for 5, subsection 5 of 215. But you lordship. No, has it been, was there in ROPA also 215.5? No, in ROPA there was no 215.5. 215.5 has not been challenged. No, my lord. My lord, regulate and check intra-part, your lordship will see further vest the election commission with the responsibilities and powers to inter alia regulate and check intra-party affairs and actions taken by candidates and parties in anticipation of and on election day, resolve all election disputes, declare the election void, so on and so forth. The last 3 lines, the law therefore entrusts the election commission with exclusive, broad and extensive powers to attend to all issues related directly and ancillary to the election process. Next case. My lord, my lord, your lordship's judgment in the suo motu case number 7 of 2017, PLD 2019. दूसरी booklet Supreme Court, my lord, it's in volume 1, tab 9. इसमें क्या आपने कहा? Sir, on page 343 of tab 9, paragraph 33, the Election Commission is a constitutional body and the Constitution stipulates that the Election Commission shall ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against. The Election Commission is also required to undertake such other functions as may be specified by an act of Majlis-e-Shura Parliament. Article 17(3) of the Constitution requires political parties to account for the source of their funds, and Section 211 of the Election Act demands that detail of election expenses be provided. The Election Commission confirmed that TLP did not account for its fund and election expenses, but surprisingly professes its helplessness because the law according to it is cosmetic in nature. And so this is what I recalled. The Election Commission should disabuse itself that constitutional and legal provisions are cosmetic. The responsibilities placed on the Election Commission by the Constitution and the law must be fulfilled. They are not optional. इसमें तो वो इलेक्शन एक्सपेंसेस वाली बात नहीं है. नहीं, इसमें इलेक्शन एक्सपेंसेस वाली बात नहीं, but there's a provision which आपके पास कुछ चल भी तो रहा था ना मैटर, हम अखबारों में पढ़ते थे क्या एक्सपेंसेस वाला केस, उसका क्या बना? फंडिंग या क्या? They found a violation, my lord. हाँ? They found a violation. नहीं, उसका बना क्या ना, हतमी नतीजा क्या बना उसका? जो कंट्रीब्यूशन वाला केस में हमने फाइंडिंग देखी, वो किधर है? वो सर वो उनको पता होगा. वो उसमें सर हमने रिपोर्ट दी थी. ये क्या हतमी फैसला क्या हुआ इसमें? फैसला रिपोर्ट नहीं पूछ रहे. The commission found out that there were funds that were received from sources prohibited under law, and a show cause notice issued. उसका final फैसला नहीं आया show cause का to my knowledge. That is still फैसला नहीं आएगा क्या मतलब? जी कानून की रिक्वायरमेंट ये थी कि पहले इलेक्शन कमीशन ये तयन करेगा कि क्या आया प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे आए हैं, अगर आए हैं तो शो कॉज करेगा. कमीशन ने शो कॉज कर दिया, उसमें फिर शो कॉज प्रोसीडिंग्स अभी तक पेंडिंग है, उससे कोलैटरल लिटिगेशन होती रही. और आई अंडरस्टैंड कि तो कब से चल रहा है? जी 2014 से. उसमें सर ये अभी एक सिंगल बेंच का फैसला था सर विद योर परमिशन, और उन्होंने कहा कि आप एविडेंस रिकॉर्ड करें, which we have challenged that we have already undertaken the exercise and we need not to further record evidence. There is a judgment of a single bench of the Honorable Islamabad High Court. We have challenged that through ICA. 9 साल हो गए अभी तक नहीं हो रहा है.
There are multiple litigations. Our orders are challenged one after another, and there are. My Lord, proceed. My Lord, this is the. How long will you take? I hope shortly. My Lord, very short. PLD 2018, Supreme Court 189. 2018. Supreme Court 189. This is at tab 7 of this volume 1, which your Lordship was just reading. Page is 238. Relevant page is page 238. Your Lordships, on page 238, notice clause E of Article 219 of the Constitution, and the last 4 words on this page. The ECP is an independent and autonomous body which exercises executive and regulatory powers derived from the Constitution. Though it has the power to appoint election tribunals and so on and so forth, my Lord, the ECP itself is a supervisory body which exercises regulatory and administrative powers under the Constitution and the law. The next paragraph, my Lord, the 5th line. Your Lordships, we have highlighted that for your Lordships as well. Besides being a limb of the executive that is charged with the duty to conduct and oversee elections in the country, we find that the ECP must necessarily possess the power to collect facts, information and data that enable it to properly and effectively perform such duty. Such a capability represents the constitutional and inherent legal power of ECP. Therefore, in exercise of its powers under Article 6 of the PPO, read with Rule 6, the ECP has all the necessary authority to ask for and collect the requisite information and facts that enable it to decide and determine whether the contributions or donations accepted by a political party are prohibited under Article 6(3). Without such power, we are of the opinion that the ECP's power to decide as to whether a political party is receiving contributions or donations from sources prohibited under Article 6(3) ebit would for all. Which party was this? My Lord, it was the case of PTI. This was a case. ये judgment तो ये 18 का है. अभी तक इस पे अमल नहीं हुआ है. Sir, not as yet. Right? Such a result would be against the clear command of Article 17(3). Are you disregarding a judgment of the Supreme Court? No, my Lord, we are not. We have then proceeded accordingly. That those proceedings have taken place, which my learned friend Mr. Ahmed Hassan was informing your Lordship about. The show cause proceedings are still pending. My complaint to the commission that the funds were being. Facts पे नहीं जाए ना. अभी तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रहा है ECB को के काम करो इसका, तो क्यों नहीं किया? ये तो 2018 का जजमेंट है. For the reason stated कि जी collateral litigation है, there is no other reason to my mind. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. जी बिल्कुल सही बात. चलिए अगला बताइए. Paragraph 47. We find it hard to fathom the contention that the intention behind the PPO and the rules is to take away the administrative and regulatory power of the ECP derived from the Constitution to call for any record, information or data from a political party to ascertain the sources of its contributions and donations, and to place such power exclusively in the hands of a party appointed chartered accountant. Learned Counsel has not been able to show us from any provision of the PPO and the rules framed thereunder, nor from any other principle of law laid down by this court, that failure by the ECP to object the audited statement of account of a political party before its gazette publication would tantamount to the acceptance of the said accounts, and that thereafter the ECP would become functus official. My Lord, 48 also I just refer, that has been highlighted. My Lord, the next judgment is at tab 13. That's a PLD 2018, Islamabad 300. That's a judgment of a learned judge. We have highlighted the relevant portions. यही 3 आप कहना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, या कोई और भी है? These are cases, 35 cases which ECP filed CPs. जी वो कहें. जी किधर गया? My Lord, may I just submit that to conclude on this proposition, our respectful submission is that the duty of the ECP to declare that a political party is ineligible for an election symbol when it fails to hold intra-party elections in accordance with its constitution is actually made redundant by the judgment of the Peshawar High Court, and so also are sections 209 read with section 215(5). Because if we do not have that power,
then it has far-reaching consequences. We cease to be a body which can have any control over intra-party elections. My Lord, this was the submission on this. There are couple of... ये आपका राइट ऑफ रिप्लाई भी होगा ना? जी सर. अब आप हमें भी जरा... May I just point out one thing? That recently... आप कोई और बात तो बताएं? My Lord, the preliminary objection that they have taken, I can... देखिए हम आपको जो आप अभी तक आपसे बात समझ आई है वो सारी बात घूमती है इनकी अपनी इलेक्शन के बारे में, ठीक है? ये इन्होंने केस ज़रा कहीं और ले गए, बट बुनियादी बात जो आपका एतराज़ था इनका, और यह एतराज़ आज से नहीं, मतलब जब ये हुकूमत में भी थे कि भाई आप इलेक्शन तो करा लें अपनी पार्टी के, तो उन्होंने कहा जी हाँ देर हो गई वगैरह वगैरह, हमें साल दे दें, आपने साल दे दिया। फिर आपका कहना ये है कि आपने जो इलेक्शन कराए सही नहीं है। ये बुनियादी सी बात है। अगर वो इलेक्शन सही है तो मेरे हिसाब से मे बी सब्जेक्ट टू करेक्शन, बाकी रिलीफ विल ऑटोमेटिकली फॉलो। फिर सर्टिफिकेशन आप लाजिम है, आप पे इनका इंतखाबी निशान देना लाजिम है आप पे, वो तो मेरे ख्याल में ऐसी चलेंगी। और अगर ये नहीं दिखा सके कि इलेक्शन उन्होंने सही तौर पे किया है तो शायद इनको फिर कॉन्सिक्वेंस सफ़र करेंगे। अब दो तीन कानूनी बातें भी खड़ी हो गई हैं। एक बुनियादी कानूनी बात है, खान साहब आप ये नोट कर लें, एक बुनियादी कानूनी बात है कि डिक्लेरेशन इन्होंने नहीं मांगा कि भाई जो हमने इलेक्शन कराया है बिल्कुल सही है, वो उन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ पे चले गए। कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ को उर्दू में क्या फरमाएंगे? नताइज और अमामिल। ठीक है, तो वो ज्यादा फोकस उधर चला गया है, वो बेसिक बात खत्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो जो अभी हमने, अच्छा एक बात हम वजाहत कर लें, अभी मालूम किया था कि जो ये 2 पिटिशंस थी, ये अभी मजीद मालूम हुआ है कि वो आज लगी थी और आज उन्होंने बैरिस्टर अली जफर साहब ने तारीख ली है दोनों में। ये आज की पोजीशन है। तो जब एक मसला वहां खड़ा हुआ है तो वही मसला पिशार जा सकता है या नहीं जा सकता है। My Lord, तो तीसरी बात जो आई है वो इसको नजरअंदाज कर दें कि अगर ये पिटिशंस ना भी थी, पिशार हाई कोर्ट के पास टेरिटोरियल या कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन था, इस पे आपने हमें कोई बात नहीं मदद की। सर मे आई वेरी क्विकली माय लॉर्ड, समिट का कहना है क्योंकि हमने इलेक्शन इधर करा है इसलिए पिशार हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन है। ये इसको सेक्शन 20 CPC जो है ना, द कॉज ऑफ एक्शन पार्टली और होली अराइज, basically that has been interpreted in so many judgments of the Supreme Court with regard to Article 199 and territorial jurisdiction. उस पे भी आप अपना, क्योंकि वो आपने रेस किया है तो सर the direct judgment on the point and observation of this honorable court is in the case of Lieutenant General Salahuddin Tirmizi versus Election Commission of Pakistan, where first the is it in the books? My lord, it's there. It's tab 6 in volume 1, and the relevant observation is at page 760. PLD 2008 Supreme Court 735, page 760. I have highlighted the portion, my lord, but I'll read it. 760. Was there some previous cases also? Yes. In the present case, Election Commission, while discharging functions in connection with the affairs of Federation within the territorial jurisdiction of Islamabad High Court, passed an order in respect of NA20 Mansehra, a constituency of province of NWFP. Therefore, the objection relating to the jurisdiction and maintainability of writ petition before the Islamabad High Court would be of no significance. It may be pointed out that in the light of principle laid down by this court regarding the exercise of such jurisdiction in such situations, the order passed by the ECP, which functions at Islamabad in respect of the constituency of province of NWFP, would be challengeable both before Islamabad High Court and Peshawar High Court. This concurrent jurisdiction is, however, subject to the rule of propriety, according to which a High Court having jurisdiction in a matter
if it has exercised such jurisdiction, the other High Court, which has also jurisdiction in the matter, may restrain from exercising its jurisdiction. In view thereof, in the present case, propriety demanded that subsequent order passed by Election Commission of Pakistan should have been challenged before the Islamabad High Court, and the jurisdiction of Peshawar High Court should not have been invoked. Ji sir, they are all there. This I point out because this is directly an Election Commission case where it was first challenged. The first order was challenged in Islamabad. The second order was challenged in Peshawar High Court. The Supreme Court they have also said that the concurrent jurisdiction for the both courts. They've said there is concurrent jurisdiction with both courts, but propriety is that if you have gone to a court once in the case of the first order, then for the second order you should also go to that court. In concurrent jurisdiction, because the order was passed for the constituency of KPK, therefore they held that the concurrent jurisdiction. Yes, my lord. But what do you say in this case where the order has been passed at Islamabad and the elections and but this order is for the whole of Pakistan. This order is for the whole of Pakistan. It can be challenged. Now, देखिए उनके elections. Suppose you found that the elections of a political party, to the extent of the federal offices of Punjab, Baluchistan were all right, but only the Khyber Pakhtunkhwa, these persons who came said कि जी हमारे यहाँ सही नहीं हुआ. So that would of course give maybe Peshawar High Court. You are not saying that because the Election Commission of Pakistan is based in Islamabad, the primary jurisdiction is Islamabad. That's you're not saying. No, I am not saying that. What I am saying is that when I passed the first order invalidating their election. Where did you pass that order? 23rd, 11th. Where? My lord, that order was passed in Islamabad. No, both orders were passed in Islamabad. Both orders were passed in Islamabad. First time round, when the order is passed on 23rd of November, they go and they challenge it before the Lahore High Court. Second time, those elections were held in Lahore? No. नहीं वो जो PTI के इलेक्शन वो जो 2022 वाले थे वो कहाँ हुए थे? जो अंडू हो गए बाद में. According to ECP's instructions, they were in Islamabad. First election. Yes, according to ECP. My lord, the second time round, when the election commission. देखिए अब हमारा एक और भी ऑर्डर पास हुआ है ना, लाहौर हाई कोर्ट ने पास किया, वो पूरा पाकिस्तान में इलेक्शन रुकवा दिए. अपनी टेरिटरी तक तो आप ऑर्डर करें, मगर पूरे पाकिस्तान में आई डोंट नो उसकी कोई रेलेवेंस होगी या नहीं. वो मैटर पेंडिंग है अभी या नहीं पेंडिंग है? My lord, that matter is pending. That is your lordship's order in. बहुत जल्दी में लिखा गया on I think the day I was leaving. 16th of December को लिखा है ना? 15 दिसंबर का ऑर्डर है. I was leaving on 16th early morning. It's in CPL civil petition number 4365 of 2023. उसकी relevance कोई है इसके? My lord, the relevance is from the point of view to show to your lordship in terms of the preliminary objection, but may I come to that in a minute as I come to that preliminary objection. On this issue of propriety, this honorable court has said if you have challenged the order of a constitutional body in one high court, then when that constitutional body understood that point passes the second order, go to the same high court. My lord, the second submission is that order will in rem or in personam. My lord, that order according to your lordship's jurisprudence is an order in personam. But if your lordship takes a look at then this of Mr. Justice Jawad Hassan's judgment in the Lahore High Court, where he says this petition is not maintainable unless you challenge the provisions of 215 paragraph 5. Now, my lord, if that is done, if the vires of a petition is challenged, then a notice to the Attorney General. There is very common phenomenon of this aspect of the case. Sometimes one levy imposed by FBR that is declared illegal by Sindh High Court, but the said levy is affirmed by the Lahore High Court. Even in the case of Semini, there is a distinction of the judgments. One High Court has declared it ultra vires, and while the Sindh High Court has declared it intra vires. So in both situations, the judgments are pending and appeals are pending in this court to reconcile. Yes. So this is also an aspect of the case. What is to be done if the one High Court declares this and second High Court declares this? My lord, there is a law, is a federal piece of legislation. I point out. If I may just think aloud, those importers, there may be importers in Lahore,
There may be importers in Karachi. So they have to show some nexus. I mean, if the importer is based in Lahore and the port of entry is Karachi, I don't think Baluchistan High Court will have jurisdiction. Right, man. Yes, man. So probably you have to show some nexus with that territory. Why are you going to this and not going, and you're not shopping for, what is the word? Forum shopping. Forum shopping. So maybe there is this thing, but I don't think we need to go into that detail. Also, I want to make it clear that we will not consider, because nobody's raised this point, the vires or otherwise of section 215(5) or any other provision, because that's not under challenge. Yes, ma'am. And Lahore High Court has made observations that this can only be done if they are challenged, but has not given a view on the matter that they are in accordance with the Constitution or not. That is for another day. Yes, my lord. Yes, my lord, because if that was the case, I would say in particular... Don't say it. All right. But when that day comes. Generally, an issue of... No, not vires, not vires. But generally, if there's an issue with regard to the interpretation of the Constitution, even then, under Order 27A... नहीं, वो बात तो अब तो बदल गया, अब तो 5 मेंबर बेंच बनना होगी ना। अब तो वो आईनी उस पे हो जाएगा ना इंटरप्रिटेशन पे। I'm saying in the High Court, my lord. हाँ, वो 27A की वो तो उन्होंने सिर्फ कहा कि अगर मैं ये रिलीफ उस वक्त दे सकता हूँ जब ये चैलेंज हो, और ये चैलेंज नहीं हुआ है, तो उसको वो तो नोटिस देते कि जब वो चैलेंज होता। But even the Peshawar High Court judgment. पॉइंट लिया, वहाँ भी नोटिस नहीं किया, आप कहते हैं। No notice to the Attorney General by the Peshawar High Court. What? No notice. The Federation was not a party. दिखाएं जरा ऑर्डर दोबारा। Sir. Page 28. Page 28. This is one of your grounds in the petition. In the petition. I must compliment my brother. He's read the petition. I didn't get opportunity to read it. इसमें पहले बताएं parties किधर हैं? Sir, the parties are there. On which page? Petition कहाँ है? Sorry. Petition, my lord, is at page 30 to 53. If your lordship may. I want to see the array of yes, parties. They are there on page 31. ECP is page Election Commission of Pakistan, and then they're all, these are the private complainants, my lord, the PTI complainants, and that's it. Pro forma respondents. No forma respondents हो गए. And then your lordship will see, they go all the way. What is the point involved? They go all the way to 15. You are on notice. My lord, Election Commission is a party. Election Commission is a party. My submission is that if a question arises with regard to the interpretation of the Constitution under Order 27A of the CPC, a notice to the Attorney General is mandatory in view of the... No, but if we agree with you, then we can't hear this case. Then it will be a 5-member bench. No, my lord, my submission is this. ये आप सिंपल कह सकते हैं कि नोटिस देना चाहिए थी 27A की, बस बात खत्म। बस यही बात खत्म। मजीद बात करेंगे? नहीं, मजीद नहीं कर रहा। वो फिर आ जाएगा सेक्शन 4 है या क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का? जी सर, then it will require 5-member bench, not less than 5 members. चले वो आप काबिल वकील आपके नहीं थे उधर? So there, I hope you're not saying that the council representing the Election Commission of Pakistan before the Peshawar High Court was not a Kabil. No, the Election Commission don't say this. The Election Commission of Pakistan was very competently represented. I'm just pointing it out. My lord, the other... that was just a side note. My lord, saying so. Other issue is that a number of respondents were not even served. Respondents number 3, 4, 5, 9 and 11 were not served. Private respondents को सुना या नहीं सुना? The complainants before you. Some were heard, but the following number 3, 4, 5, 9 and 11 were not even served. इनके वकील तो थे, देखें 2 and 7 के भी थे, 8 के भी थे, 10 के भी थे, 12 के भी थे, जी सर, और 13 के भी थे. अब वो कोई सर्विस अवॉइड कर रहा है, इलेक्शन ही खत्म हो जाए. 3, 4, 5, 9, 11 के नहीं थे, but वो बात मेरे ख्याल में इलेक्शन मैटर्स में जरा लचक रखना चाहिए. अगर हम सब पे सर्विस को जान से अवॉइड करेगा कि इलेक्शन गुजर जाए फिर मैं सर्विस करूंगा. My lord, the last submission relates to the technical objection raised. My lord, when your lordship goes back all the way up to the case of Javed Hashmi, your lordship will see it is reported as PLD 1989 Supreme Court. PLD
1989. 89 Supreme Court, page 396. This is just to show your lordship the title of the parties. ये आपकी बुकलेट में नहीं है ना Sir, ये बुकलेट में नहीं है sir. जी इसमें क्या Because this was a preliminary objection raised. Now your lordship may just look at the title of the parties. This is a 5-member bench. Election Commission of Pakistan was the petitioner. तो आप कह रहे हैं कि ये ग्राउंड नहीं ले सकते हैं. That is the submission, my lord. How do you distinguish those two cases? My lord, that learned senior counsel has cited. My lord, in neither of those cases relate to the Election Commission. To start with, I would also seek your lordship's leave to place on record a list of 35 cases where your lordships are dealing with appeals filed by Election Commission. And your lordship may already also consider one point. Please give a list to Mr. Khan Sahab. Khan Sahab को भी दीजिए. जी. And pending तो फर्क नहीं पड़ेगा ना. नहीं सर, फिर भी आ सकता है. Disposed of the list. And your lordship may also see your lordship's judgment on 22nd. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Decided. जी सर. 2nd of January. Disposed of, I don't know what it means. It could be dismissed for non-prosecution. सर ये decided थे. ये अभी जो most recent है ये 2 जनवरी 2024 का है by this very bench. ये देखिए बुनियादी सी बात है. I don't know. If you can be sued, so can you sue? I mean, ये तो बड़ा अजीब सा होगा ना. You can be sued, suffer the consequences, and you can't even appeal. And the second, I don't know. It's not. The second doesn't sound fair. The second submission would be. या तो कहेंगे you can't be sued. फिर तो वो उनको मसला खड़ा हो जाएगा. You can't file a writ against ECB. My lord, the reason why I pointed out federation and all that was that when your lordship looked at the array of parties on page 31, the only official party is the Election Commission. If I cannot sue, then a judgment which will relate to... कमीशन जावेद हाशमी के केस में इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का जजमेंट जो रिट पिटीशन में फाइल हुआ. जी रिट पिटीशन में My lord, and it stands to reason, because in this case, if your lordship examines page 31, I am the only official respondent who is there. If I can't challenge it, then there can be no challenge, and the Peshawar High Court judgment will have finality, and your lordships will have no power under 185. Now, we could probably carve out an exception, which I don't think would be applicable, would be if an allegation of a personal nature is made against a particular member or members of the Election Commission of Pakistan, that you as Election Commission cannot challenge it, that particular member, suppose the writ of quo warranto, but you can't hold office. So naturally it doesn't affect the Election Commission of Pakistan, and that member may challenge it, but not the Election Commission. But I mean, I don't know, does it not stand to reason if you can be sued, so yes, can you sue? That is our submission. That is our submission, and the two cited judgments were dealing with statutory bodies. Yes. So I don't know how persuasive they are. Anyways, we keep our mind open. This is an electoral body which makes all these decisions. Got it. Anything else? That's all. चलिए आइए खान साहब, आप कल शुरू करना पसंद फरमाएंगे? आप कल शुरू करना पसंद फरमाएंगे या आज? आपकी मर्जी है. Fresh? You look tired. We are also tired. Your Lordship was very kind to offer that it can be on Saturday morning as well. So, हाँ, अगर खत्म नहीं हुआ हम चलाएंगे. देखें, हमारे आपको बार-बार हम ये कह रहे हैं इस अदालत से इलेक्शन हम करवाएं ना चाहते हैं. सब लोग भी ज्वाइन कर ले ना कि इलेक्शन होना चाहिए, बस जी हो. बिल्कुल बात तो वहीं पर है. साहब कल का आपका क्या? कल कितने बजे रखें? कल जी जैसे नहीं आपकी मर्जी है. देखिए असूलन कल के हफ्ता है ना, हफ्ते को कोर्ट बैठती नहीं, मगर हम आपकी खातिर बैठे हैं. जो टाइम आप कहेंगे हम बैठेंगे. इसे जो टाइम नहीं आप बताएंगे. दी मॉर्निंग आवर्स बताएं. आप नहीं आप बताएंगे. आप इतनी कम कदर करते हैं सीनियर मुकला की कि उनसे टाइम पूछ लें. अगर आप 6 बजे कहेंगे तो शायद हम कहेंगे नहीं सर आज आगे बढ़ा दें. Let it be 9:30 then as usual. $10
आप ठीक है, कुछ आपको कुछ पूछ गाइड कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस you want to make it 10? Actually, some instructions. ये 10 बजे कर लें. We will also put in some thing in writing, because particularly the questions that have been raised, which I'd like to. Would you want? Have you been provided with these books? में लेके आएंगे बना के. Provided with these books? हाँ मिल गई हैं आपको? जी, जो इन्होंने कुछ ये केस लॉ की बुक्स हैं, दे दीजिएगा मखदूम साहब इनको एक सेट. आप कल बना के लाएंगे, कल ही लेके आएंगे जो भी पेपर्स आपने बनाने. तो चलिए 10 बजे रख लेते हैं, हो सकता है फोटो कॉपी वगैरह में टाइम लग जाता है, तो 10 बजे वो आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग भी हम ले सकते हैं, मगर आगाज तो कर लेना जरा, इस बात को खत्म कर लें वन वे और दी अदर. ठीक है सर, वी आर इन योर हैंड्स. Whatever you want, we will accommodate you to the extent of time. Kind of your option. My lord, may I? ये ना समझें कि हम आपका इलेक्शन आपको सुनेंगे और आपको भी सुनेंगे, मगर आपके कोई, अच्छा हाँ एक बात है, कोई मजीद पॉइंट्स हैं उनके अलावा? जी मैं सिर्फ इजाफी गुजारिश करूंगा, मैं रिपीट आज नहीं कर सकते हैं, 2-4 पॉइंट्स 2-4 मिनट्स में आप कर दें, फिर इनको फ्रेश स्टार्ट मिल जाए. मैं बिल्कुल इजाजत देता, जल्दी कर दें. जी बिल्कुल. पहली तो गुजारिश ये करता हूँ कि सर कि आई एम कॉन्शियस. आप उनसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? जी करता हूँ. मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाहता हूँ कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो केस प्रेजेंट किया है, जी आप रेस्पोंडेंट नंबर 10 जी 10 अकबर एस बाबर, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो heard in Peshawar or not? No जी, we were not served notice and I could not. आपको पता नहीं चला अखबार वगैरह में पहुंच जाते? What I learnt was that a notice will be issued, but it was not issued then. If I have to go back public notice, क्या पहुंच जाते हैं? आज हमने नोटिस तो नहीं किया है ना जी. खान साहब देखें अब ये कितने चुस्त हैं, पहुंच गए. जी आप भी थोड़ी चुस्ती दिखा देते. अपनी जातियत तक मैं इधर था नहीं, वरना मैं जरूर पहुंच जाता. क्लाइंट नहीं पहुंचा. चलिए खैर, इस पे कुछ ज्यादा वजन नहीं इस बात में. गुजारिश आपको देखिए, एक बात होती है, एक चीज रिपोर्ट हो रही है मीडिया में सब में, जी. अगर आप वाकई क्या पहुंच जाते, चलें उस बात को छोड़े, आगे बढ़िए. मैं सिर्फ फैक्चुअल गुजारिश आगे बढ़िए. मेरा इसमें मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि मैं जो चंद आइन की शिक है, खासतौर पे 17(2) वो पढ़ना चाहता हूँ. शिक तो देखिए सुन लेंगे, आपका जो अपना स्टेटस है ना वो बताइए. स्टिल यू आर ए मेंबर और नॉट? जी आई एम अ मेंबर. आई वाज अ फाउंडिंग मेंबर. आई हैव नॉट बीन रिमूव्ड फ्रॉम मेंबरशिप. नो शो कॉज एवर नोटिस. नेवर रिजाइंड. आई हैव नॉट रिजाइंड. आई हैव नॉट जॉइंड अनदर पार्टी एवर. ठीक है ना, जी ये फैक्ट है जी. और जिस तरह मैंने गुजारिश की कि इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला भी है. ठीक है, वो तो सुन लिया. अब मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा था. सॉरी माय लॉर्ड, आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे. आपको जी मैं पहली तारीख को जो G8 का दफ्तर है, मरकजी दफ्तर, वहां गया. अपने साथ काफी 10-20 लोग लेकर गया. नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए गया, कागजात जमा कराने की जो भी तफासील थी उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए गया. मुझे कोई कागज या नॉमिनेशन पेपर या कोई रिक्वायरमेंट, कोई रूल प्रोसीजर नहीं दिया गया. मगर वो आपके हाथ है, कोई नॉमिनेशन पेपर की शक्ल हमें दिखाई? नहीं, मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं दिया गया. बल्कि आपको नहीं दिया गया, मगर वो क्या लगता शक्ल उसकी कैसी है? मैंने जो इलेक्शन कमीशन में प्रोसीडिंग्स हुई उसका रिकॉर्ड जो मेरे पास है उसमें भी मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी जी. अगर नॉमिनेशन का कोई फॉर्मेट था, पेपर था, मैंने नहीं देखा जी. इसमें अगला पॉइंट, और ये मैंने बड़ा वजाहत में जो अपनी मेरी शिकायत है, नॉमिनेशन पेपर डिड नॉट एग्जिस्ट. कुछ नहीं. अगर आप पेज 231 पे मेरी शिकायत का पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे, नॉमिनेशन फॉर्म मिला मेरे इल्म में नहीं है जी. अच्छा बताइए. तो पेज 231 में पैराग्राफ 2 में मैंने वाज़े तौर पर लिखा कि ऑन नवंबर 30 प्रेस रिलीज वाज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ PTI को कमेटी स्टेटिंग that all arrangements have been completed for holding the intra-party elections on December 2, 2023. Copy pressly attached. The press release also stated the appointment of Mr. Niazullah Niazi as the PTI Chief Election Commissioner. The press release did not mention any other names of the PTI Federal Election Commission, nor did it share any other details regarding the intra-party election, including election rules and any regulations, detailed schedule of elections, nomination timeline and procedure, criteria for acceptance and rejection. आप लिख रहे हैं जी? ये मैंने जो कंप्लेंट दायर की इलेक्शन कमीशन को उसमें लिख रहा हूँ. इलेक्शन की डेट आपको पता थी जी? वो जो प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि 2 तारीख को. कॉपी आपने भेजी उनको, PTI को? जी उनके पास है, बिकॉज दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड. दिस वाज अ कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमीशन. कौन सी कह रहे हैं आप? प्रेस रिलीज जी ये 30 नवंबर को जो प्रेस रिलीज इशू की पार्टी ने कि हम इलेक्शन करने जा रहे हैं. लगी हुई है प्रेस रिलीज.
Press release, sir, I'll have to check. अगर नहीं हो तो दिखा दीजिएगा. इलेक्शन से पहले इशू हुई थी प्रेस जी 30 नवंबर को हुई थी. अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि 17 आर्टिकल 17 जो है उसमें दो पहलू हैं. एक तो जनरल है जो पार्टी के हवाले से है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन जो मुझसे रेलिवेंट है वो 17(2) का मैं कुछ हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ सर. एवरी सिटीजन not being in the service of Pakistan shall have the right to form, ये पहला हिस्सा है जो सब आर्टिकल 1 में भी है, but the second one is more important to me, और be a member of a political party. तो फंडामेंटल राइट है किसी का भी कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लेना. और आगे है कि सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ. सो गुजारिश ये है कि किसी का भी किसी पार्टी का मेंबर बनना फंडामेंटल राइट है. मैं फाउंडिंग मेंबर हूं, था, आज भी हूं. मैंने आज तक कभी कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, बल्कि मैं यही जद्दोजहद करता रहा कि इस पार्टी की इस्लाह अंदरूनी मामलात की हद तक हर पहलू में होनी चाहिए. और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, जो कि साइट भी हुआ फॉरेन फंडिंग का, वो भी उसका आविष्कार नतीजा था. सो गुजारिश ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है. अच्छा, ये जिक्र हुआ था फाउंडिंग मेंबर्स की, आपके पास लिस्ट है? मेरे पास पुराना आइन है जिसपे मेरा नाम है, मैं फराहम कर सकता हूँ. वो कल ले आइएगा. जी मैं जी. और वो फाउंडिंग मेंबर्स में आप हैं कोई या नहीं है? सर आई हैव टू देख लीजिएगा. मुझे ये जरूर मालूम है कि मैं कल बता दीजिएगा, अगर या तो आज जवाब दें या फिर कल. सर दूसरा, मैं सेक्शन 218(3) जिसका हवाला दिया गया है उसको मैं समझता हूं कि 17(2) के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन है सेक्शन 218 सब सेक्शन 3 जी. आर्टिकल सब आर्टिकल 3 218 तो नहीं जिक्र किया. 218 it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary. अच्छा, आप आइन पढ़ रहे हैं? जी आइन का. हाँ, तो उन्होंने पढ़ा जी, वो पढ़ा. हाँ. मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं कि इंडिविजुअल मेंबर के हवाले से 17(2) को, उस पोर्शन को, मेरी मेंबरशिप को 218(3) के साथ पढ़ना है और फिर 219(e) के साथ भी पढ़ना है. बट एक और आपके मेंबरशिप का तो सवाल उन्होंने क्या ऑब्जेक्ट किया है कि आप मेंबर नहीं है? जी, पेशावर हाई कोर्ट में जो पिटीशन है वहां पर उन्होंने ये कहा कि इज नॉट अ मेंबर, और अभी भी शुरू में दिखाइए किस पैराग्राफ में कहा है. Respondents 215 are not members of PTI. Page 36, paragraph 11. Page 36, paragraph 11. जी. That the respondents 2 to 15, I was number 3 in that, are not members of PTI, nor contestants of any intra-party elections that have. ये तो एक जनरल डिनायल है. इन्होंने ये कहा. सो मेंबरशिप के हवाले से जनाब ने पूछा, हम इनको भी ये कह देते हैं कि किस बेसिस पे वो ये बात कर रहे हैं. जी जरूर, वो भी कल जवाब दे देंगे. और आप दिखाइए कि आप उसके वो क्या उसको कहते हैं, फाउंडिंग मेंबर को क्या कहेंगे? फाउंडिंग मेंबर ही था मैं, वो उसका सबूत दिखाइएगा. जी मैं अगला पॉइंट, मैं आर्टिकल 222 का हवाला भी देना चाहता हूं सर. आर्टिकल 220 जी आइन के सब एफ में. आर्टिकल 222 एफ जी. आर्टिकल 222 ये कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मजलिस शूरा पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर सो मेनी थिंग्स. एफ में कहता है ऑल अदर मैटर्स नेसेसरी फॉर द ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 2 हाउसेज, द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स. यहां पर रुकना चाहता हूं कि ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज में अब 2017 का जब कानून आ गया है और उसमें इंट्रा पार्टी एक एम्फसाइज किया गया है कि एक अहम तरीकाकार है जो अंदरून में पार्टी होना चाहिए. तो ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज नहीं हो सकती अगर पॉलिटिकल पार्टीज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ सही क़यादत पार्टी में नहीं आएगी, और फिर वो पार्टी ना फैसला करे कि कौन कौन से मुस्तहक लोग हैं जो नुमाइंदगी अवाम की करेंगे. आगे बढ़िए.
اور اس کا جو ایکسیپشن ہے سر, بٹ نو سچ لا شیل ہیو دی ایفیکٹ آف ٹیکنگ اوے اور ابریجنگ اینی آف دا پاورز آف دا کمشنر اور دا کمیشن. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آلدو ہمارے پاس ڈیٹیلڈ ریزنز نہیں ہیں ابھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے, لیکن پشاور ہائی کورٹ یا کسی کورٹ کو بھی یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ کوئی ایسی انٹرپریٹیشن کرے جس سے کمیشن کے اختیارات میں کمی آ رہی ہو, اور جو اس کی ڈیوٹی ٹو کنڈکٹ اے فیئر الیکشن ہے اور جو 218 کا بینچ مارک ہے. پشاور ہائی کورٹ کیا نمبر تھا WP 6, وہ معلومات کر لیں ذرا رجسٹرار سے کہ وہ آرڈر آ گیا ہے, اور آرڈر آ گیا ہے تو وہ منگوا لیجئے, اور جو نہیں آیا تو کب تک آ رہا ہے یہ بھی پوچھ لیجیے گا. جی سو یہ وہ اضافی آئینی شک ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. آگے بڑھیے. اب میں سر الیکشن ایکٹ پہ آنا چاہتا ہوں. جی آ جائیں. انڈیویجول کمپلینٹ کے حوالے سے سیکشن 15 ایک نئی شک ہے جس میں کمپلینٹس کی پروویژن, سیکشن 15 آف دی الیکشنز ایکٹ 2000 کمپلینٹس یہ پہلے روپا میں نہیں تھا. یہ 15 یہ کہتا ہے اینی پرسن اگریوڈ بائی. ہو گئی بات, اگلی بات. جی اس کے بعد سر جو سیکشنز ہیں میں 200 کی طرف آتا ہوں. 200 میں 200 سب سیکشن 4 کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ notwithstanding anything contained in subsection 1 a political party shall not, اور اس کا سب اے جو ہے propagate any opinion or act in a manner prejudicial to the fundamental principles enshrined in the constitution. So میرا جو proposition ہے for consideration of the court وہ یہ ہے کہ یہ fundamental پرنسپل انشرائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز اور مستحکم پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں بنے تاکہ جو ہاؤسز ہیں وہ ڈیولی کانسٹیٹیوٹ ہو سکیں جو عوام کی پراپر نمائندگی کر سکیں. جی اس کے علاوہ سر جو آئی ول سمرائز مائی پروپوزیشن کہ کانسیکوینسز انٹرا پارٹی الیکشن ہولڈ نہ کرنے کے 3 ہیں جو انویزڈ ہیں الیکشن ایکٹ میں. پہلا سیکشن 2025 میں ہے جس کا انلسٹمنٹ سے تعلق ہے. کس سے؟ انلسٹمنٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی. رجسٹریشن. جی رجسٹریشن یا انلسٹمنٹ. What is the word used in the enlistment. Enlistment. یہ میں گزارش کروں. Enlistment. جی انلسٹمنٹ. اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی انلسٹمنٹ کے لیے آتی ہے تو سیکشن 202 یہ کہتا ہے کہ آپ نے کچھ ڈیکلریشنز یا کوئی سرٹیفیکیشنز دینی ہیں. اس میں بھی 209 کا ذکر ہے. تو اگر ایک پارٹی جو 209 کس کا آئین کا الیکشنز ایکٹ جس میں سرٹیفیکیشن ہے کہ جی ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے, کہنے کی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کراتی ہی نہیں ہے تو وہ تو انلسٹ ہونے کی بھی ایلیجیبل نہیں ہے. انہوں نے کرایا. میں آپ کو نہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کرایا, اب کوئی کنٹیسٹ نہ کرے, ہم کوئی زبردستی تو نہیں کروائیں گے اس کو کنٹیسٹ. بالکل صحیح. میں صرف یہ گزارش الیکشن ختم ہو جاتا ہے اس بات پہ. جی میں اس پہ آتا ہوں, لیکن میں صرف گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 کانسیکوینسز ہیں ویزاوی انٹرا پارٹی الیکشن. ایک پوٹینشیل کانسیکوینس یہ کہ پارٹی کی انلسٹمنٹ بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے آگے بڑھیں. دوسرا کانسیکوینس یہ ہے جس کا ذکر ہوا کہ اگر سرٹیفکیٹ فراہم نہیں کیا جاتا تو فائن امپوز کر دیا جائے گا. یہ سیکشن 2085 میں ہے. اور تیسرا کانسیکوینس ہے ان ایلیجیبلٹی آف اے سمبل. تیسرا کون سا سیکشن ہے؟ جی وہ سیکشن ہے 2115 4 and 5. 2115 سب سیکشن 4 and 5. سو گزارش یہ کہ فوکس جو ہے پارٹی کا وہ تیسرے والی کانسیکوینس پہ زیادہ رہا. سمبل نہیں ملا تو نقصان آپ کو بھی نہیں ہوگا. آپ بھی تو ممبر ہیں نا PTI کے. فاؤنڈنگ ممبر ہیں آپ. فاؤنڈنگ ممبر. I am guilty of following the law and do not worry about the consequences. We are just asking a question. میری ذات پہ نہیں جی, مجھے تو فائدہ ہوگا اگر پارٹی مستحکم ہوگی. آپ اصولوں پہ لڑنا چاہتے ہیں جی. I am guilty of following the law. اگر اس کا کوئی نقصان ہے تو ٹھیک ہے, ہم سوال پوچھتے جائیں گے, آپ جواب دیتے جائیں. جو فوکس رہا ہے آرگیومنٹ کا جو بظاہر لگ رہا ہے وہ 3rd کانسیکوینس پہ ہے. سو فل پرسپیکٹو یہ ہے کہ اس سے اخذ یہ کیا جاتا ہے کہ یہی مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا. سب باتیں چلی گئی ہیں سمبل پہ. جی وہ تو اگر الیکشن صحیح ہو گیا تو سب کچھ ملنا چاہیے. وہ کانسیکوینس ہے میرے حساب سے. اب سنیں گے خان صاحب کو کل کیا کہتے ہیں.
बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस बीइंग नियर, तो मेरे ख्याल में सिंबल का फोकस है, बट कानून की मंशा ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाजिम है। कानून की बुनियादी मंशा है कि इलेक्शन कराओ जी, साफ शफाफ कराओ, फिर बाद में चीजें मिलती जाएंगी या नहीं मिलेंगी तुम्हें, वो तो एक तरह से सजा या जजा या सजा वाली बात आ गई ना। जी बिल्कुल। अब इट इज नॉट फॉर मी, कंप्लायंस वाली बात अलग है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा शिकवा जाती तौर पर एज ए कंप्लेनेंट ये है कि मुझे मौका नहीं फराहम किया गया, जिसकी वाज़ेह निशानदेही 2 सेक्शन 208 सब 2 में भी की गई, जो हवाला दे दिया गया। मैं उसको रिपीट नहीं करता कि हर मेंबर को ये इख्तियार है कि उसको इक्वल प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट इलेक्शन। और कोई बात? सो ये वो अजाफी प्रोविजंस है। आप इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? पीटीआई शायद मुझे तंग कर रही है सर, मैं तो अपना हक की खातिर लड़ रहा हूँ। तो ये आपकी जो कब से शुरू हो गई है? 2014 नवंबर से जी। उस वक्त क्या हो गया था 2014? उस वक्त पार्टी में फंड्स का मामला था सर। मेरा ख्याल था कि गैर उसमें प्रोहिबिटेड सोर्सेज है, फॉरेन फंडिंग तो एक जर्नलिस्टिक टर्म बन गई, लेकिन कानूनी मंशा ये थी कि प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे नहीं आने चाहिए। और प्रोहिबिटेड सोर्सेज क्या थी? वो ये थी कि मां सवाए इंडिविजुअल सिटीजन्स के और कोई पैसे पार्टी में नहीं दे सकता कानून के मुताबिक। तो मेरा ये कहना था कि हाँ, citizens of Pakistan, wherever they may be, can contribute to the political party, but who is not a citizen or somebody who is a corporate body, even a local company for that matter, cannot contribute to the funds. तो मेरी तो कंप्लेन उस नौयत की थी कि शफाफियत है। Companies cannot contribute. The law said जी it could not. Which section? This was section 5 and 3 of the PPO, and this is also now in sections. खैर ये इसमें इशू नहीं है, बट इट वाज स्पेसिफिक प्रोविजन है जी कि चलिए ठीक। सोर्स क्या पॉइंट। सो मेरा इस मामले में अभी यही गुजारिश है कि जो इलेक्शन था वो बिल्कुल शफाफ तरीके से नहीं हुआ। एक आपको चुभता हुआ सवाल पूछ सकते हैं? आप खुद खड़े हुए हैं या आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है? खुद ही खड़े हैं जी 2014 से। अच्छा, और इसमें आपने ये सवाल पूछा है तो मैं इजाजत हमारे जहन में जो बात होती मैं तो कह देता हूँ। आपकी इजाजत है तो मैं भी कैन स्पीक फ्रीली। यस। 2014 में जब मैंने कंप्लेंट की थी, उस वक्त जो भी मामलात मुहरकात थे, मेरी काविश जारी रही। आई फॉट सिंगल हैंडेडली अगेंस्ट the mindset that respectfully prevailed at the election commission, the mindset that was reflecting the government of that time and the powers that be. So I have stated किसकी हुकूमत थी जी? हुकूमत तो एक है जो हर वक्त रहती है और एक हुकूमत है जो बदलती रहती है। तो मैं तो रेगुलेटरी स्ट्रगल और सियासी स्ट्रगल और प्रिंसिपल स्ट्रगल को परसिस्टेंटली विद सीरियस माइंडनेस परस्यू करता रहा हूं और अभी भी करता रहूंगा। जो भी आउटकम हो वो तो जनाब के हाथ में। Done? I have nothing further to add. ठीक है, बट आपको डॉक्यूमेंट लिया जी मैं इंशाल्लाह। ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह 10 बजे। खान साहब ठीक है 10 बजे। वो इलेक्शन कमीशन वाले भी ले आए होंगे ना फाइल? आपने बोला था फाइल। वो फाइल आप ले आए, इलेक्शन कमीशन की फाइल, ओरिजिनल फाइल, वो हमें जरा छोड़ दीजिएगा। ओरिजिनल फाइल लाए हैं इस मैटर की? नहीं, राइट का क्या मतलब, लाए हैं या नहीं लाए? नहीं, हाँ छोड़िए, नहीं ले जाइए, गुम भी हो सकती है, कल ले आइएगा अगर लाए नहीं है। ठीक है, अगर कोई चीज देखना चाहे हम साहब तो वो देख लेंगे। तो अगर हाँ ओरिजिनल फाइल जो भी इस मामले की है, वो लाहौर वाली, पेशावर वाली, इलेक्शन वाली, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, ठीक है 10 o'clock इसमें हाँ ऑर्डर लिख देते हैं आज का शॉर्टर से। हाँ ओके, कल का बेंच भी निकलवाएं, इशू कर दें। हाँ इसमें लिखें this civil petition for leave to appeal assails the order of the assails the order, किधर क्या order पेज, order किस पेज पे है? हाँ, assails the order dated 10 January 2024 of the Peshawar High Court Peshawar, whereby it set aside the decision
Decision कहेंगे या judgment कहेंगे? The order of the Election Commission of Pakistan within bracket ECP dated 22 December 2023 and full stop and issued certain directions. The Election Commission, we are informed that the detailed reasons have not as yet been provided, but since the matter is time sensitive and as the elections, general elections are scheduled for 8 February 2024 in Pakistan, this matter requires immediate attention. Also, accordingly, we proceeded to hear the matter. Mr. And heard Mr. Makhdoom Ali Khan and heard learned Mr. Makhdoom Ali Khan, senior ASC, full stop. Mr. Learned senior ASC, Mr. Hamid Khan has filed caveat. अच्छा, वो अली जफर साहब हमसे बात करना चाह रहे थे उधर से, उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, नहीं होंगे मेरे, तो वो बेशक फॉग के बाद पहुंचे, कम से कम आपको सुन लें, तो वो अगर कोई भी एड्रेस करना चाहे तो इन पर्सन आके कर ले। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, खाली सिंपल नोटिस। अच्छा, इधर कौन अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी चौधरी साहब तो बैठे हुए थे, हैं वो होंगे, वो 27 की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, आप इसमें पार्टी तो नहीं है, मगर अगर कोई सवाल उठ गया तो हम शायद पूछ लें आपसे। हाँ, ओके, 27 की जरूरत नहीं है, वैसे डीएजी होता है ना, जाहिर है फेडरेशन और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो जरूरत पड़ी हम आपसे पूछेंगे, मगर अभी मैटर तो लगता नहीं है आपसे कुछ पूछें। बाहर फिर भी आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं अगर कोई आप करना चाहें। आप तो सुबह से बैठे थे, सुन रहे थे ना सब कुछ, ठीक है, तो आपका हम वीकेंड भी खराब करना चाहते हैं। उसकी फिक्र मेरी नहीं है। अच्छा, क्या लिखा and states that and has raised preliminary legal objection with regard to the maintainability of the instant petition, and states that he will expand further thereon tomorrow. Full stop. To be treated as parter to come up tomorrow at 10 a.m. The office to inquire from the Peshawar High Court whether the detailed reasons have come, and if not, when are they expected. क्या कहा उन्होंने? ठीक है, ठीक है। Anything else you want to note it? Anybody? चलें, thank you everyone for spoiling our weekend. बुरा न माने, ऐसा न लाइट नोट। आइए, थैंक यू जी, चल। There is some other case. ये ऑर्डर तो ये बताता है मखदूम साहब 8/12। There is some other case. ये ऑर्डर तो ये बताता है मखदूम साहब 8/12/2023 का कि during that period they have already conducted fresh elections. ये सर ये 657 इसमें लिखा है ना बीच में, when confronted, नहीं पढ़ा है ये 657 सर। अच्छा, ये ऑर्डर तो फिर ये 15/12 का आपने पढ़ा है? जी सर, 8/12 का ऑर्डर उससे पहले का सर जो है, इसमें भी WP 332 का जिक्र है। जी सर, उससे ऊपर जो लिखा है, when confronted with ये 332 WP क्या चीज है? Sir, there is another petition pending before a full bench of the court relating to other matters. I am not fully aware of it, what it is about. अच्छा, ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे इनके, जो आप कह रहे हैं जायज नहीं है, वो कह रहे हैं जायज है, उनके रिजल्ट क्या है? इलेक्शन रिजल्ट आप कह रहे हैं ना कि ये जो इलेक्शन, इनका कहना है कि ये 8/6/2022 के जो इलेक्शन थे इनके, ये सही थे। आपको कहना है ये इलेक्शन सही नहीं थे, उसके रिजल्ट्स क्या हैं?
उसका सर उसके नतीजे पे they held another election. नतायज किधर है, कौन जीता? This is the election which that is the election which your lordship saw where everybody was नहीं, again. ये तो अभी के इलेक्शन की बात हो रही है ना, मैं 8/6/2022 के इलेक्शन का पूछ रहा हूँ, वो नतायज कहाँ है उसके? आप सवाल समझ गए? They are not on the record. The reason why we have not brought them on the record is that they accepted the order of the election commission and they have. वो वही लोग हैं जो कि ये मौजूदा हैं या अलग लोग थे? My lord, I'll have check. We can check, but खान साहब आप बता सकेंगे, इस पर रोशनी डाल सकेंगे? जो 8/6/22 का जो आपका इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्टेड कौन हुए? आप बकौल आपके कौन लोग इलेक्टेड हुए उनसे? जो हुए, हाँ, नहीं वो फर्क है जो मौजूदा इलेक्टेड लोग हैं वो पता नहीं ये दे दें, मैं बताता हूँ वॉल्यूम पे पड़े उस ऑर्डर में लिखा, उसी ऑर्डर में सर लिखा सर इन्होंने ये इलेक्शन कराया एंड देन मिस्टर नहीं अब बेशक देखिए, हम आपको बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, हम आपको वक्त देंगे, मगर जैसे जैसे सवाल उठते जा रहे हैं तो वो आप नोट करते जाइए, या फिर अगर आपके फौरन जवाब है तो दे दीजिए, क्योंकि ये 3 वॉल्यूम्स इनने फाइल किए हैं, हमें भी बड़ी दुश्वारी हो रही है इसको पढ़ने में, तो अगर किसी चीज़ का जवाब है तो दे दीजिए, अगर जवाब नहीं आप लाना चाहते हैं बिल्कुल आप जरूर फाइल कीजिए। नहीं आप नोट करते जाइए ना ये चीज, तो अब सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि ये जो नताइज थे जो 8/6/2022 के, ये 8/6 इलेक्शन डेटेड, इसमें पेज 412 पे है, 10 को हुए, 6-8 को हुए, हमें 10/6/2022 के थे ना आपके पिछले इलेक्शन, इसमें पेज 412 पे है जनाब, प्रेयर में हाईकोर्ट की प्रेयर में लिखा है 10/6/2022। 4-1 At that time, Gohar Ali Khan साहब वादा 4-1 चेयरमैन गोहर साहब थे। ये जो आपका 412 प्रॉब्लम, ये पेज 412 देख लीजिएगा। 412 हाँ ये आ गया ना, नहीं ये तो कुछ और है, नहीं 412 सर, इधर पढ़ दें अगर आप पार्ट 2 में। हाँ पढ़िए प्लीज जी, रेफरेंस vis-a-vis लेटर डेटेड so and so, जनाब 412 पे है आप? नहीं, अगर इलेक्शन की सिर्फ डेट का इशू है तो वो तो आपके 10/6/2022 को हुए थे, वो आपकी ये तो प्रेयर से पढ़ रहा हूँ, ये तो कुछ और चीज है ना, इलेक्शन कमीशन का जो प्रेयर है, नहीं जवाब नहीं, जो आपकी प्रेयर थी हाईकोर्ट में, लाहौर हाईकोर्ट की बात हो रही है। नहीं ये कहा था कि जो हमारे पिछले इलेक्शन 10/6/2022 के थे वो ठीक थे, उनको वैलिड डिक्लेयर करें, वो जो पिटीशन पेंडिंग है आपकी हाईकोर्ट में, जो ये मखदूम साहब बता रहे हैं 5 मेंबर के सामने जो था इशू, जी वो फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए ना, तो आपने फ्रेश करा लिए, फिर उसके बाद करवाए दूसरे, ये क्योंकि they gave us 20 days to do that, so we had to do it within that prescribed time and we did it, which they are challenging now। एक सेकंड, जरा मैं जरा भी कंफ्यूज हो गया हूँ, बकौले आपके 10/6/2022 को इलेक्शन हुए जी, इनका कहना था वो सही नहीं है जी, इनने ऑर्डर पास किया, मगर वो ऑर्डर आपने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, आपने वो ऑर्डर माना नहीं, फिर लेकिन कंप्लाई भी किया जी, कंप्लाई भी किया हमने उसी के तहत, तो फिर आपका कहना ये वो जो पिटिशंस आपकी जो फाइल्ड हैं वो आपने विड्रॉ कर ली हैं, जो हाई कोर्ट में पड़ी हैं, लाहौर हाई कोर्ट में WPR 1171, लेकिन we have already complied with the order, so therefore that becomes infructuous। नहीं मगर कोई इतला तो दे ना हाई कोर्ट को जा करके। सर दी है, इसमें मेंशन की होगी, आप पेज देखिए, पेज 657, पेज 650 में आपका ये 81171 ऑफ 2023 ये पिटीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपसे पूछा उन्होंने, व्हेन कन्फ्रंटेड विद द क्वेरी दैट सिंस इंटर पार्टी इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परसुएंट टू इम्प्यून ऑर्डर डेटेड 13 सितंबर 2023 पास बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैव बीन हेल्ड as to how this petition is maintainable, उस पर आपके वकील साहब ने जवाब दिया कि ये अभी हम इसको आगे ऑलरेडी subjected to full bench जी of this court, तो ये नॉलेज में आ गया हाई कोर्ट, नहीं ये पूरा आगे लिखे ना, सबमिट्स
Permit that since similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 of 2023 and other allied matters, proprietary demands that instant petition be also be referred to the learned full bench. ये हुआ है बस इसके में मुझे देखिए अब मैं जरा बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ. एक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर आपके किया, कब ऑर्डर है इनका इलेक्शन कमीशन का? ऑर्डर माय लॉर्ड 428 पे जो पेज है उसका तारीख है 23/11/2023. 23/11/2023. ये नहीं वो जुरिट पिटीशन में चैलेंज किया. पहला वाला तो यही है ना, declare hold that impugn order. The matter was heard on 13th September. एक सेकेंड, आपका ऑर्डर किधर इलेक्शन कमीशन का? वो देखा जो आप पहले पढ़ रहे थे. Page 428. This is the order passed on 23rd November 2023. 23rd November. ये डेट कहाँ लिखी है? सर डेट से पढ़ के बता रहा हूँ आपको. प्रेयर क्लॉज में जो इनकी हाई कोर्ट में डेट ऑफ हियरिंग वाज 13/9. डेट ऑफ हियरिंग टुडे अनाउंस टुडे. तो इसकी तारीख क्या है इस ऑर्डर की? इस ऑर्डर की तारीख सर 23/11 है. ये 428 पे लगा हुआ है. 23/11/2023 है. जी सर. और नीचे उन्होंने साइन पे डेट नहीं डाली है, बट वो डेट ऑफ हियरिंग में ऊपर लिखा हुआ है. जी सर. तो उन्होंने एक साथ ऑर्डर को चैलेंज भी किया और एक साथ उन्होंने इलेक्शन भी कर लिया. यस मैडम. ये हुआ. यस सर. तो फिर उन्होंने ये दरख्वास्त क्यों की हाई कोर्ट को कि मेरा ये इसको पेंडिंग रखें? वो कह रहे थे कि जिसको हम विड्रॉ कर रहे हैं. They could have, but they नहीं. मतलब मुझे इसकी जरा लॉजिक बताइए खान साहब. वो फिर अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो फिर उसको आप वापस ले लें, बात को खत्म करें. उसको जिंदा क्यों रख रहे हैं पिटीशन को, लाहौर वाली को? To the contrary, they had it referred to a larger bench of 5 judges. Am I missing something? I can't follow this. Sir, we don't know what was the logic. The elections had taken place, but they nevertheless. Zafar will explain why that was. जी फरमाइए. The 3 petition have actually been filed when Election Commission was trying to remove the chairman Imran Khan from the position of chairmanship of the PTI. And they were making their excuse. आप देखिए ना, अब आपने आगाज ही बात का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से किया है. No, Your Honor. आप हमें सिर्फ ये बता दें जी कि वो जो पिटीशन आपने जो फाइल की थी जब क्यों पेंड हो गई, उसको आपका क्या बना, आपने उसको जिंदा क्यों रखा है? Your Honor, वो उसके साथ क्लब है, वो सेम पिटीशन है, डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है क्योंकि इसमें चेयरमैन ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए वो उसके साथ हमने क्लब करवाया कि लीगल इश्यूज पे. यस 332 है. यस योर ऑनर. खान साहब मुझे बात समझ नहीं है, आप मुझे समझा दें. खान साहब आई हैव नॉट अंडरस्टूड. जरा मुझे नहीं जरा समझा देना, बात समझ नहीं आ रही. एक मिनट की इजाजत. हमने वो पिटीशन उसके साथ इसलिए क्लब करवाया कि जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन ने दी थी. पहले बताया 332 है क्या? 332 वो पिटीशन है जिसमें हमने चेयरमैन पीटीआई के रिमूवल फ्रॉम चेयरमैनशिप के केस के सिलसिले में जो नोटिस आया था उनको, इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू किया था इमरान खान को. यस. तो उसका तो इससे इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है ना. यूनाना डिस्क्वालिफिकेशन का केस चला रहे थे कि हम क्यों ना आपको रिमूव करें फ्रॉम चेयरमैनशिप. वो तो हम बात समझ गए. वो केस ऑर्डर है ना. यस योर ऑनर. इससे तो कोई ताल्लुक नहीं. इलेक्शन की बात पूछ रहे हैं आप. योर ऑनर ताल्लुक है. वो डिस्क्वालिफिकेशन का बेस बना के चेयरमैनशिप से हटाना चाह रहे थे. इसमें जब नोटिस आया कि आपके इलेक्शन नहीं हुए तो उसमें उन्होंने वो फैक्ट्स का जिक्र किया, लीगली इनकरेक्ट कराया. तो जब कोर्ट में चला गया, कोर्ट में पढ़ा गया तो उन्होंने कहा सेम इश्यूज इन्वॉल्व है, लिहाजा लीगल साइड पे उसके साथ क्लब कर देते. अदरवाइज वो इंफ्रैक्चर्स हो चुका है क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट किया टू द एक्सटेंट ऑफ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन. तो अच्छा एक सेकंड है, एक सवाल और उठेगा. जी योर ऑनर. एक मैटर आपने खुद लाहौर हाई कोर्ट गए, 5 मेंबर बेंच बनवाई, इलेक्शन का मैटर है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया है कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं. आपका मौक़िफ़ था इलेक्शन सही हो, फिर आपने कहा चलो फिर भी कर देते हैं इलेक्शन, दोबारा खुश हो जाएं. तो फिर आप लाहौर हाई कोर्ट ही में रहते ना, फिर आप पेशावर क्यों चले गए? योर ऑनर हमने इलेक्शन पेशावर में करवाए थे.
इलेक्शन पेशावर में करवाए थे तो उससे तो कोई मतलब मेजॉरिटी ऑफ रीजन खान साहब जरा मुझे कानूनी हम क्यों गए थे योराना फोरम शॉपिंग करने नहीं गए थे इस्लामाबाद में हमारी लीडरशिप आपने इस्तेमाल किया मैंने नहीं इस्तेमाल किया मैं ये योराना सिर्फ एक मिनट अब आप देखिए ना एक कोर्ट के पास एक लिस्ट पेंडिंग है यस योराना इलेक्शन ही के मुताबिक है और ना सिर्फ आम बेंच है मैंने 5 मेंबर बेंच आपके लिए बना ली है जी अब वो मैटर पेंडिंग होते हुए दूसरा हाई कोर्ट देख कैसे सकता है इस बात को ये इसका जरा कानूनी जवाब दे योराना मैंने अर्ज ये किया कि टू द एक्सटेंट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो गई जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया वही ऑर्डर है ना ऑर्डर तो वही इलेक्शन कमीशन का योराना वही उसको जब हमने अमल कर लिया उस पर जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो हमने इलेक्शन कराए पेशावर में इस इलेक्शन ना इन्फ्रक्शंस होने की ये मेरे हिसाब से आपकी बात लॉजिकल है मगर इस ऑर्डर में आपके वकील ने कहा कि नहीं इन्फ्रक्शंस हुई है योराना वो लीगल साइड पे इन्फ्रक्शंस दोबारा पढ़ते हैं ऑर्डर सैयद अली जफर एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग द पिटिशनर सबमिट दैट सिंस सिमिलर क्वेश्चन इज ऑलरेडी सब जुडिस बिफोर द लर्नेड फुल बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन WP number 332 and other allied matters propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. Yes, Your Honor, High Court raised the question. High Court has raised the question that it has become sub judice because you have already complied with the order. Yes. But your counsel said that it is not sub judice. Let it be fixed before the same 5-member bench. Your Honor, yes, to the extent of holding up intra-parties elections. That is correct. Yes. According to legal situation, it had become infructuous. So that has become infructuous to the extent of intra-parties elections. But since the questions were involved, divergent arguments between you and the earlier counsel. Your Honor, the legal questions involved in that petition were alive, so they were kept to the extent of those legal questions, and that's the reason that is being clubbed and referred to the full court. We held the election; they were full. The election were held at Peshawar. Your Honor, the entire leadership was unable even to come to Islamabad. Sorry, आपके अपने election commissioner ने कहा they were not held in Peshawar, they were held in some place called Chamkani. Your Honor, हमने arrangement करवाए थे. इनको सिक्योरिटी मांगी हमने Are you arguing as party as counsel what? Your Honor, जो आपकी असिस्टेंस हो सकती है मैं उसका जवाब हम तो सीनियर काउंसिल से लेना चाह रहे हैं we have noted all the questions मैं सिर्फ देखिए खान साहब देखिए let's go by constitution and the law जी हम अभी उस पे नहीं आए कि आपने सही किया गलत किया इन्होंने सही किया गलत किया जी आप इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया सही किया गलत किया वो भी हम नहीं देख रहे हैं वो ऑर्डर को आपने जाके लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जहां से एक पहले से पिटीशन पेंडिंग पड़ी थी आपने कहा इस पिटीशन को उसको साथ लगा लें चलें ये भी ठीक है आपकी रिक्वेस्ट पे लार्जर बेंच बना दे उन्हें 5 मेंबर बेंच बना दी फिर अली जफर साहब पेश हुए और उन्होंने कहा जी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अब तो आपने इलेक्शन कर लिए तो अब आप ये पिटीशन इसको खत्म कर दें उन्होंने कहा नहीं इसको आप रखिए सब जुडिस विद फुल बेंच अब ये मैटर इलेक्शन का मैटर है चलें अब या तो आप इंतजार करते कि हाई कोर्ट या तो आप इसको वापस ले लेते वो आप नहीं कर रहे हैं इन्फ्रक्चर्स खुद से नहीं होती ना कोई आएगा कहेगा फिर ऑर्डर उस पे पास करेगा जज इन्फ्रक्चर्स हो गई है वापस हो रही है जो भी आप कहना चाहें उस पिटीशन को आप जिंदा रख रहे हैं आप जाके इशारा हाई कोर्ट कैसे पहुंच गए ये मुझे समझ नहीं देखिए ये तो सब्सिक्वेंटली जब इलेक्शन हो गए और उसको इलेक्शन कमीशन ने नल वॉइड डिक्लेयर किया फिर हम पेशावर हाई कोर्ट गए ये तो लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं पसंद आया नहीं लाहौर इसकी वजह पहले आपको वही आप एक कोर्ट जाते हैं फिर दूसरे जाते हैं नहीं सर अब वो मतलब ये नहीं सर उसका वजह है उसकी वजह ये जब हमने इलेक्शन कराए हमें कहीं और सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा रही थी सिर्फ पेशावर में हमें सिक्योरिटी फ्राहम की गई आप मांग लेते ना कोर्ट से बात कि मुझे सिक्योरिटी नहीं जा रही है हम अगर हाई कोर्ट नहीं देती हम आपको देते हाँ ये बताएं ये ना बताएं खान साहब मुश्किल सवाल आप इन पे छोड़ देते सिक्योरिटी का योराना ये मुश्किल सवाल हम हमेशा सीनियर काउंसिल से पूछते हैं ये मुझे राइटिंग में जो आप सारे जो आप दीजिए बिल्कुल दीजिए जो आप देंगे राइटिंग में आपके सामने मगर देखिए
دیکھیے نا پھر مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ایک عام کیس ہوتا ہے نا, یہ ہے ٹائم ریلیٹڈ کیس. یہ آپ کو سمبل نہیں دے رہے ہیں, آپ کو ایک سمبل چاہیے, تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا سمبل بنتا ہے آپ کو فوراً مل جائے. تو ہم عام طور پہ تو آپ کو بہت ٹائم دے دیتے, مگر اس میں پھر آپ کو سمبل نہیں ملے گا, ہم یہ نہیں چاہ رہے. اسی لیے ہم نے کہا آپ جب چاہیں ہم سننے کے لیے تیار ہیں. دوسرا ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی میں نے اپنے کولیگس کو کہا کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ کیس ہے, اس کو پہلے کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں جب تک یہ اس پہ, اب دیکھیں وہی سارے لوگ ہیں, سید علی ظفر صاحب بھی وہاں موجود ہیں, وہ بھی نہیں بتا رہے ہمیں کہ کیا بنا اس کیس کا. یہ تو نہیں کہ دوسرے کاؤنسل ہیں, وہی کاؤنسل ہیں نا سارے. پینڈنگ ہے. We'll submit in the morning, sir. چلیں, مگر یہ دیکھیں اب آپ گور صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا جو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا, فورم شاپنگ, جو کورٹس جنرلی فراؤن اپون. تو یہاں سے ریلیف نہیں ملی تو جا کے وہاں فائل کر دو, وہاں سے نہیں ملی تو دوسرے کورٹ میں چلے جاؤ, تو پھر یہ پھر سسٹم کو خراب کرتا ہے. تو دیکھیں اب آپ نے ٹھیک ہے لاہور چلے گئے, فائن, تو پھر وہیں رہیے نا لاہور میں, پھر آپ کیوں جا رہے ہیں پشاور, یا پھر آپ جائیے جہاں کے الیکشن کمیشن موجود ہے جو کہ اسلام آباد ہے. تو دیکھیں اب آپ کہیں جی میں الیکشن کرتا ہوں جا کر فلاں جگہ میں اس لیے پٹیشن کروں گا, آپ اپنا کاز آف ایکشن نہیں کریٹ کر سکتے. کاز آف ایکشن از کریٹڈ بائی لا, یعنی کہ میں یہ کام کروں گا تو میں نے جو کام کیا اس بڑی ایکسٹراڈنری سچویشن ہے جناب, اچھی طرح جانتے ہیں. بھائی آپ کے سامنے بات پوری چلو, آپ کے سامنے پینڈنگ ہے کیس جس میں ہم نے عرض کیا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے, ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے, ہمیں کہیں سیکیورٹی نہیں دی جا رہی, ہمارے لوگوں کو اندر کیا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں کہیں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ان دیز سرکمسٹانسز میں, نہ اسلام آباد میں ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی نہ لاہور میں جہاں ہم الیکشن کرا سکتے. سو پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ دی اونلی پلیس ویئر سیکیورٹی از پرووائڈڈ از ان پشاور, اینڈ therefore we held the election in Peshawar. When elections were held in Peshawar, territorially it was only right and proper to file it before the Peshawar High Court. So see, these are the various stages of a case. دیکھیے خان صاحب جی, ایک ہوتا ہے انتظامیہ, اس میں ابھی اب ایک ہے الیکشن کمیشن, وہ ایک آئینی ادارہ, ایک ہے عدالتیں جو کہ آئینی عدالتیں ہیں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. آپ آئے ہمارے پاس, علی ظفر صاحب